And this time it's Kashmir Bar Association Cup. Bar Association Gandharbal, they're taking on High Court Srinagar at this stage. We talk about the toss. The news from the centre is it is Bar Association as Gandharbal. They have won the toss and have opted to bat first. Jahangir and Advocate Ayaz are the two batters out there in the middle. Arif Sikandar has caught the ball in hand, and we're all set to go for this encounter between these two sides. Once again, let me remind you, it is Kashmir Bar Association Cup and an important game between the two sides. Bar Association is Gandharbal and High Court Cricket Club Srinagar. All set to go, as you can just witness on the mobile screen, as we got the two openers going to start from for Bar Association is Gandharbal, whereas Arif Sikandar is just warming up. He is having a word with his fielders. He is just busy in setting up his field. As the captain and couple of fielders, they are having a word with each other. And you're watching this game live and exclusive on Global News Network on Facebook. And in case you're watching it on YouTube, you just search JK Sports Discovery and enjoy the live broadcast. And do inform us about video and audio quality as well. And this Amity field is hosting Kashmir Bar Association Cup, and it is game number 5 of this mega edition. We are all set to go, and this live broadcast is brought to you by BMZ Group Strakpura, Almaida Bakery Rohama, and Mansoor Decorations Rafiabad. So Mansoor is watching us on YouTube. JK Sports Discovery, all set to go. The bowler just manipulating his field, I can say, on the onside. He's got one fielder at fine leg, one at scare leg, one at mid-on. So the three fielders are inside the ring trying to save the single. And on the offside, he has got slip in place. Third man is out. There is point, cover, short cover, and mid-off inside the ring. So with this fielder set, we are still waiting for the official confirmation, official call of the umpire to get ready. But everything is ready, and we're all set to go. It will be Jahangir Bajad to be on strike, and he's going to face. He's having a quick look at the field as well. He's just counting those fielders. And the fielder restrictions are on. He just can't place two fielders inside the 30-yard circle. But talk about the environment, the weather conditions. It is pretty gloomy. And you can see the clouds are hovering above us, but it looks absolutely fantastic. It is a fantastic atmosphere for this game. And play is the signal, and here is the first ball of the game. Over the stumps, and first ball, he drives him inside out, and he deliberately goes in the air, wide of the fielder and into the fence for 4. That's a fantastic start first up. That's a great start first up. Outside off stump, an easy chance for the batter as he goes aerial and into the boundary for 4. Starts with the boundary, it's 4 without loss. Jahangir Bajad, he gets off the mark in style. He gets off the mark with the boundary as Arif Sikandar goes once again, and he pushes that one on the offside and steals a quick single. A good call, and pointing in each other's eyes, and they steal a single. Gets down to the other end, that brings Advocate Ayaz but on strike. 5 without loss after winning the toss. Bar Association is Gandharbal. They have opted to bat first, and will look to get off to a good start. Will look to get runs on board. In the meantime, Arif Sikandar gets ready once again, and that's a good delivery. That's a batter line as the ball just shapes away, even though the bowler was interested, but wicketkeeper was never appealing. And that was very close to the outside. As a good delivery as he beats Ayaz, but you can see he was just rooted to the crease, just trying to flirt with that delivery, and he gets beaten. All ends up. A terrific ball to beat the batter. It misses everything and goes into the gloves of wicketkeeper. 5 without loss in over number 1. Next ball. He's getting a bit of extra bounce onto that, pitching on good length spot, just shade outside off stump. As the batter was trying to have a go at it, he was flashing hard, but doesn't connect at all. And the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 5 it is in over number 1.
3 fielders on the onside, all inside the ring. One man I can witness is he's now dropping back at fine leg region. He's got a good number of fielders on the offside trying to save the single, and 2 fielders can be placed outside the 30-yard circle to save the boundaries. And, Arif goes once again, and this is up in the air. That will land safely. He was trying to go over the bowler's head, gets it high on the bat, nearly at the sticker, and he's a lucky man as the ball drops well short of the charging mid-off fielder, and they steal a single. Off the mark he is, but not a convincing way. Ayaz goes down to the other end. Next ball, short and wide outside off stump. Easy pickings for the batter. Giving chance for the batter, giving him that width served on to that occasion. He flashes hard and slashes that one over backward point and into the boundary for 4. That's a good start for Jahangir Bajaj. He moves on to 9 with couple of boundaries. We're done with over number 1. It's 10 without loss. Haris Javed is watching us on Facebook, and Riaz Ahmed as well. Walaikum salam Riaz, thank you very much for joining the live broadcast. And in case the viewers who are connecting us on Facebook and YouTube, in case you are watching us on Facebook, just follow the official handle and subscribe us on YouTube as well. And do mention about the audio and video quality. We're done with over number 1, 10 without loss, with Jahangir smashing couple of boundaries, moves to 9 of 4, and Advocate Ayaz Bhatt is batting on 1. So the fresh over, the second over begins from the commentary box end, and he is having some issues in his run-up, in his follow-through. It will be the second over. We'll have to wait and watch who is going to be the bowler to be on the top up to proceed with the second over, and Advocate Ayaz is going to face. Second over in progress, 10 without loss. The very first over, Gandharbal, after winning the toss, they have decided to bat first, and not been updated yet the scorecard. We'll have to wait and watch who has got the ball in hand to bowl the second over from the commentary box end. Remember, it's the game number 5, where Bar Association as Gandharbal are taking on High Court Advocates Cricket Club in this Kashmir Bar Association Cup. And our Qayyum has joined the live broadcast with Haris Javed and Riaz Ahmed. So we got some issues in the Creek Heroes. That's why you can see there is a short pause in the game as the scorer, the official scorer, is having a look. He is trying to correct the things out there, and is still waiting for the official confirmation. Who has got the ball in hand? We'll have to wait and watch. 10 without loss, couple of boundaries for Jahangir Bajaj. He started with a boundary, the first ball of the game, then on to the final ball. He just smashes the ball down to the deep cover boundary. Advocate Adil sending in best of luck for Peer Majid Hamid. But at this stage, as I can say, you can witness on the mobile screen, is there is a short pause in the game. Remember, this beautiful, this majestic and this iconic venue of Eden Park MET is hosting Kashmir Bar Association Cup, and we have the game on here. The 5th game, the morning one, we have a double-headed today as well. And the second game will be played at Gursir Sopor. We got Ghulam Rasool Rathar watching the game. Walaikum salam, and thank you very much for joining, and wishing you a mesmerizing and a spectacular day ahead. It's 10 without loss. Adil Bashir sending in good luck for District Bar Association's Gandharbal. तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका। गुलाम रसूल राथर हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट आदिल हमारे साथ जुड़े हैं, पीर माजिद हमीद बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं, और आदिल बशीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड लक ओवर चैंप्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल के लिए लिख रहे हैं, और कुछ जो है यहाँ पर क्रिक हीरोज़ ऐप को लेते हुए कुछ इशू आ रहा है, तो उस वजह से उसे जो है ठीक किया जा रहा है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी
बार एसोसिएशन गांधरबल के दरमियान ये मुकाबला जारी है। अयाज भट्ट, मजमूई स्कोर है 10, बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। और अब यहाँ पर जो है क्रिक हीरोज ऐप में जो है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आया है, गालिबन प्लेयर्स को का जो है वो उस लिस्ट के हवाले से, तो उसे एडजस्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस दौरान आप सब व्यूअर्स का। और लतीफ़ बिन अहमद राजा हमारे साथ जुड़े हैं, बेस्ट ऑफ लक गांधरबल के लिए लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वानी मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। एडवोकेट मुदस्सिर भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सईद जाकिर आप कुपवारा से हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल बशीर भी हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम रसूल राथर के साथ। एडवोकेट अब्दुल अहद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस दौरान दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है और बॉलिंग मार्क पर है महराज है बॉलिंग मार्क पर। दूसरे ओवर में शेख आमिर इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं गांधरबल टीम के लिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गांधरबल के लिए। और सामना करेंगे एडवोकेट अय्याज भट्ट के लिए महराज। अगली गेंद के साथ ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेल दिया है, दो फील्डरों के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन को छूते हुए 4 रन के लिए बैक फुट पर खेला गया, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। अय्याज के बल्ले से आने वाला यह चौका और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन के साथ 14 हो चुका है, बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर का खेल जारी। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। शेख आमिर बहुत बहुत शुक्रिया। और भट्ट सिद्रा हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप गालिबन पुलवामा से हमारे साथ जुड़ी है। बॉलिंग मार्क पर है महराज, सामना करेंगे एडवोकेट अय्याज के लिए। वो द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, इस मर्तबा क्रॉस बैट से ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, खुशकिस्मत रहे गेंद जो है बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मंसूर डेकोरेशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे स्पॉन्सर है शाहिद नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर सोपुर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक मरतबा फिर महराज ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अय्याज के लिए बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, थोड़ी देर गेंद हवा में रही लेकिन फील्डर मौजूद काफी पीछे सर्कल पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर बढ़ता हुआ 15 हो चुका है, बिना किसी नुकसान के बार एसोसिएशन गांधरबल का। अब्दुल शकूर भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हंदवारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकिब वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद इस मरतबा विकेट छोड़कर इनसाइड आउट, हवा में खेला गया स्ट्रोक और देखना होगा फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। एडवोकेट मुस्कान भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गांधरबल के लिए ऑल द बेस्ट लिख रहे हैं। और आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा, आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी, फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क और इसके अलावा आप क्रिक हीरोज ऐप पर भी हमें देख सकते हैं। अगली गेंद के साथ इस मरतबा पैड से टकराई गेंद थोड़ी उछाल लेती हुई, कोई नुकसान नहीं, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। करारुद्दीन मेरे होम टाउन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 16 मजमूई स्कोर हो चुका है, 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल। महराज ने अपना पहला ओवर फेंका जिसमें उन्होंने 6 रन दिए और मजमूई स्कोर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गांधरबल का 16 बिना किसी नुकसान के। एडवोकेट अय्याज भट्ट जिन्होंने 6 रन बनाए, जबकि जहांगीर बजाड़ ने 10 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए। सईद जाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें जरूर जो है जानकारी दीजिएगा। एडवोकेट मुस्कान भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल शकूर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं हंदवारा से और शाहिद नज्जार जुड़े हैं। मंसूर डेकोरेशन भट्ट सिद्रा यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ी है। शेख आमिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सज्जाद टेंट्स हाजिन से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल शकूर भट्ट प्लेइंग 11 जानना चाहते हैं तो जरूर आप तक जो है प्लेइंग 11 पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आरिफ को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, आरिफ सिकंदर, और सामना करेंगे उनकी गेंद का जहांगीर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गई सीधे
विकेट कीपर के दस्ताने में। 16 मजमूई स्कोर, तीसरे ओवर का खेल जारी। एमिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड और कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप का एक अहम मुकाबला। अगली गेंद की ऑप्शन से बाहर और बाहर की जानिब जाती हुई और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 17 बिना किसी नुकसान के बार एसोसिएशन गांधरबल का 17 हो चुका है मजमूई स्कोर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब पर जुड़े हो, क्रिक हीरोज ऐप पर या फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। हवा में खेला गया स्ट्रोक देखना होगा, उस ओर फील्डर तैनात, काफी पीछे फील्डर को तैनात किया गया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब बल्कि 2 रन का इजाफा गालिबन हो चुका है। 18 हो चुका है, 19 हो चुका है स्कोर बिना किसी नुकसान के। नादिया भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल टॉस, गेंद को खेल दिया, उस ओर फील्डर तैनात। देखना होगा क्या रोक पाएंगे। जी हां, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने की कोशिश। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रन के इजाफे के साथ 21 हो चुका है। अरबीना जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नायदा भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल शकूर जो है वो प्लेइंग 11 जानना चाहते हैं। दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 जरा जो देर बाद जो है आप तक पहुंचाएंगे। अगली गेंद, अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला हवा में और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए ये छक्का आता हुआ यहां पर बल्लेबाज जहांगीर बजाड़ के बल्ले से। जहांगीर बजाड़ कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को हवा में खेला 6 रन के लिए। और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 27 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी है और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद फेंकेंगे बॉलिंग मार्क से आरिफ सिकंदर। अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, इस मरतबा बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला, खेलते ही दौड़ पड़े और रन मुकम्मल होता हुआ। तीसरे ओवर का खेल जारी, 28 स्कोर बिना किसी नुकसान के। बार एसोसिएशन गांधरबल का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गांधरबल टीम ने हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के खिलाफ। अगली गेंद आरिफ सिकंदर की, इस मरतबा फुल टॉस ऑन साइड पर, हालांकि जोरदार अपील हो रही है और आउट करार दिया गया है। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे किस तरह से गेंद जो है वो सीधे पैड को छू गई, थोड़ा स्टंप्स कवर किए थे और अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली फिजा में बुलंद की और आउट करार दिया यहां पर बल्लेबाज को। तो आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए बल्लेबाज अयाज भट्ट और यहां पहली विकेट गिरी है 28 के मजमूई स्कोर पर। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल और प्लेइंग 11 जो है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। The batter has been given LBW on a full toss ball. He was trying to work the ball on the onside, misses it altogether and gets wrapped on the pad. So there was appeal of LBW and umpire took his time, then raised his finger, and here is the first wicket for District Court Srinagar as Ganderbal Bar Associations lose their first. It's Advocate Ayaz who has to walk back to the pavilion as he's taking a long walk back. And he cannot believe his luck. He has missed a full toss ball and was wrapped on the pads and up goes the finger of the umpire. 3 overs gone, 28 for the loss of 1. And may I remind you the toss was won by Bar Association as Gandharbal and they have opted to bat first. They got off to a good start. It was effortless batting until now. You can see that final ball of over number 3. The batter was wrapped on the pads and umpire had no hesitations, even though he took his time to raise the finger. But at the 11th hour he decided to give him out and he is walking back to the pavilion, although he wasn't happy with the decision and he has to take a long walk back. So the viewers who are keen to know the playing 11 of both the teams, we have got Bar Association is Gandharbal led by Shahrukh Butt, Abid Mushtaq, Afaq who is the wicketkeeper batter
Advocate Inayat Hussain, Advocate Tariq, Advocate Javed Dar Sajjad, Imtiaz Rathar, Latif Ahmed, Sofi Rafiq, Tawqir Abdul and Yunus Dar. And we got District Association is Srinagar, and we got Muzammil who is leading the side, and I got Aqib Butt, Irfan Khan, Jafar Khan Bilal, Malik Ghazanfar, Malik Rahil Minhaj, Mudassir Maqbool, Pir Abrar, Shakur Ahmed and Shaukat Malik. So this is the playing 11 of both the teams participating in this game. With Momin Shabir, Walaikum Salam Momin Shabir, thank you for joining the live broadcast. 3 overs gone, 28 for 1. As Altaf is the new man at number 3, he walks down to the centre. It will be Jahangir on strike, and he is batting so well today. 21 off just 9 bowlers for him. He is striking it well. As first ball of the next over is down the leg side, and umpire just signals it a wide, takes the score to 29 for the loss of 1. It is Mehraj operating from the .29 for the loss of 1. In the meantime, it will be Mehraj bowling from the commentary box end. Wicket down, that is of Ayaz, who was trapped at LBW. In the meantime, outside off stump, the batter tries to go on the up. He was trying to drive the ball on the up. It doesn't connect at all as the ball goes past the outside edge. Misses the bat by a whisker as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 4th over is in progress. They're going at nearly 10 runs per over, although they have lost a wicket, but Jahangir is batting well. That's a good delivery. That's a beautiful ball. An absolute corker that was, and Jahangir had no clues as the ball goes again, beats the batter and goes into the gloves of wicketkeeper. A great delivery. Look at that, how the batter was caught in a tangle, and he wasn't convinced onto that shot, was trying to go onside, closing the bat face early and gets beaten, all ends up. Next ball. And he goes off the back foot and pushes it with soft hands on the offside. A direct hit at a non-striker's end, but he has made it back to the crease. He's well home, he's back home, and they steal a quick single. It's been a good over until now. Couple of good deliveries going past the outside edge. And then on to the next ball. The batter just pushes it on the offside, steals a quick single. And more often they're trying to focus on rotating the strike. And Bar Association is Gandharbal. No doubt they started well. Lost a wicket of Advocate Ayaz. And Altaf will be facing Miraj for the first time. And wraps him on the pad. There is appeal of LBW, but it looks like the impact is outside off stump, and it was missing off stump as well. Let's take a look at the replays, and you can see the batter was going off the back foot and it hits him on the back leg and above the knee roll, and that is why umpire wasn't interested at all. He signals no, decline is the appeal. And in this over, Mehraj has bowled good lines and lengths, no doubt about that. Next ball, a gentle push on the offside, and they cross for a single. 31 it is for the loss of 1 in over number 4. And in case the viewers who have joined us a bit late, remember this is Kashmir Bar Association Cup. We're in match number 5, where is Bar Association. Right in Bar Association is Gandharbal taking on High Court Advocates Cricket Club. Again, a good delivery as the batter was shuffling across. Was again, you can see the mistake by the batter there, just closing the bat face quite early. And again, the ball goes mighty close to the off stump and mighty close to the outside edge. Well, I can say it beats everything in routing to the keeper. So 4 overs have been completed, going at 7.75 runs per over. They lost a wicket as well. So you can say it has been a mixed start for both the sides. Talk about Bar Associations, Gandharbal. They started well with a couple of good shots. It was effortless batting. But in that over number 3, it was Arif Skandar who got rid of Ayaz of a full toss ball.
he was given LBW. And this over of Miraj, it has been excellent one. Probing lines and lengths he's bowled, and attacking lines and lengths, and completely beating the batter. Couple of occasions the ball went mighty close to the bat. So it will be over number 5. And a bowling change from the captain, Advocate Mohsin. Had a remarkable tournament for the various bar associations of Kashmir. The dedication and effort he has put in ensuring seamless arrangements, from the well-coordinated matches to the online displays and thoughtful lunch provisions. Thank you very much for your comment. Thank you very much for your love and support. So 33 for the loss of 1 it is. And Advocate Mohsin gets ready once again to Jahangir. And on to the hips. Jahangir goes off the back foot and works it on the onside. Will get a single. And both the batters now trying hard to get those singles, doubles, and to rotate the strike well. No, they lost a wicket. One good partnership will definitely bring them back into the game, and they will be back into the contest in over number 5. As he goes again, bangs that one shot, tries to go onside, edged and gone, and he was very late to bring his bat down as the ball kisses the glove and goes into the gloves of wicketkeeper. Second one goes down, and it's a short delivery which has done the trick. Advocate Mohsin has got rid of Altaf, I guess. He was trying to go onside, and he was very late to hook the ball. A big edge, and wicketkeeper completes the catch. Second one goes down. 34 for the loss of 2. A good short delivery. Advocate Mohsin testing Altaf with a short one, and he was caught in that trap. Tries to go onside, edge. It glows it to the wicketkeeper, and he was straight away up. The ball had near it. The wicketkeeper and the close-in fielders were up straight away. And here is one more wicket. Second one goes down. 34 for the loss of 2 it is. And we're in over number 5. It will be Aslam Mallah, as he is just making his way into the middle at number 4 for the team. It's been a good start for High Court Advocates Cricket Club Srinagar, as they started with a couple of wickets in the power play, and that's what has been a plus point for them. Wickets in the power play will mean that it will surely be a bit pressure on Bar Association's Gandharbal, although they started well, but those 2 wickets are really going to dent the innings. It's still 2 more bowlers to go in this over, as we watch Advocate Mohsin in the very first over has got a wicket as well. To the new batter Aslam, and starts outside off stump. A gentle swing onto that, as you can see the ball shapes away, and he's just luring the batter for the drive. He goes for the drive, and he was nowhere to the pitch of the ball. He was nowhere close to the ball, and the ball goes away into the gloves of wicketkeeper. With the ball to go in the penultimate over of the power play, again in the block hole, as the batter at the last moment brings his bat down on time, as he chops it down to the cover, and there is no addition to the total. An excellent start, and it has been a superb start for Advocate Cricket Club Srinagar, as they got 2 wickets up front, and Bar Association's Gandharbal, they surely has got 2 wickets. They surely has lost 2 wickets, as I said. Partnerships will mean that they will be back into the game. But until now, it has been a heyday. It has been a good start for High Court Advocates Cricket Club. 34 for the loss of 2. So 5 overs have been completed.
The final over of the power play, it will be Mehraj to continue. And that's a good ball. Just pushes it on the offside, steals a single, and gets a bit of extra bounce. Mehraj, although hasn't got a wicket, and he has been impressive with the ball, economical with the ball. And Ghulam Rasool Rathar is mentioning that District Bar Association is Gandharbal. They just need to take advantage of the power play and must send those batters who can get some lusty blows out there. But it's not easy as lost 2 wickets, and they'll be focusing on saving the wickets, preserving the wickets. With 35 on board in over number 6. So it has been a great start for High Court Advocates Cricket Club. The way they started and have done a good job picking wickets up front will mean that they will definitely limit the scoring chances of the batters as he goes. Again, that's a good delivery as it shapes away, pushes it back to the bowler. A valiant effort in the field, in the follow-through, and surely has saved a couple of runs for the team. 6th over in progress, so is the final over of the field restrictions. Kashmir Bar Association Cup underway here at Amity Sports Field, and it has been the efforts of Advocate Azim Pandit working tirelessly and giving chances to those advocate teams to showcase the skills in the field of sports as well, and this has been driven hard to mid-off, and they steal a quick single. 3 fours until now and a 6 in this game. 36 for the loss of 2 with 2 more bowlers to go. As Mehraj goes once again, backs away, and he hits it in the air, and he tries to clear the infield, and the ball lands short of the fielder. They steal a single. Jahangir is trying hard, and he's been the man who is trying to take those risks, and is trying to put pressure on the bowlers to score freely and quickly. The rest of the batters need to accompany him, need to support him very well. With the ball to go in the power play as Mehraj goes once again wide outside off stump. The batter doesn't connect at all, and he gets beaten. The ball goes into the gloves of wicketkeeper. 37 for the loss of 2 after 6 overs. So you can say going just a shade over 6 runs per over. But the wickets they got up front, 2 wickets, and the Bar Association is Gandharbal. They haven't started well. They lost 2 wickets at the top, and you can say High Court Advocates Cricket Club have started really well, picking up 2 wickets at the top of the order. The Ganderbal Bar Association's failed to take advantage of the power play. They failed to use the power play well. 6 overs gone, and it will be Mohsin to continue. Seventh over begins. The fielders will be dispersed. We will have now 5 fielders outside the 30-yard circle. Let's take a look. He has got just 4 fielders outside now, trying to put pressure on the batters, with an attacking fielder set. And he just has 1 fielder on the onside at the boundary ropes, that is deep scare leg, and 1 is at short scare, 1 is at mid-on, 1 fielder at long off boundary, 1 at deep cover, 1 at third man. And Adil Bashir is mentioning that you just need to send Advocate Ishfaq to the field on number 4, and it is Jahangir Bajad and Aslam Mallah out there and taking the responsibilities. In the meantime, Mohsin will continue. He bowled a good first over where he got rid of Altaf, who was caught by wicketkeeper and testing him with a short delivery, and he got rid of the batter there, Advocate Mohsin, and he gets ready to Aslam Mallah. He's just setting the field, and now that mid-on fielder goes to long on. A deep scaler comes
back in. It will be Mohsin. Over the stumps he goes. And onto the pad. This was trying to work it on the onside. He was trying to flick it at Tamley. And it doesn't time. It gets wrapped on the pad. But Shirley was missing leg stump. It was sliding down the leg. And so there was no appeal of LBW. And has been a quality start, surely. No doubt about that for High Court Advocates Cricket Club. They are controlling the game well. This is a good delivery again. You can see and runs have dried up completely. After 3 overs, the score was 29, and we are in over number 7. They just have 38 on board. So last 3.2 overs have just yielded 9 runs and a wicket as well. So that is why I call it a heyday for District Association Srinagar. And this one pushes it on the up, down to long off, and will get a single. And, not timed it well, but still gets a single, and he goes down to the other end. 39 for the loss of 2 after 6.4 overs. 7th over in progress. And it will be Jahangir, who has batted so well. Faces the next ball. Oh, that's an uneven bounce onto that delivery. He was trying a short ball, and it has been signalled as a wide. So 5 wides. A vicious and a venomous bounce onto that delivery. Tries to test to the batter with short stuff, and he gets enormous bounce onto that delivery, and no chance for the wicket keeper as well. 5 wides, 44 for 2, as he has to re-bowl that. Advocate Mohsin has conceded 9 runs until now in his spell, as he goes to Jahangir once again. Jahangir goes across the stumps and works it on the onside, steals a single, and he goes to the other end. With that single, Jahangir moves to 26, and Bar Association's Gandharbal are 45 for the loss of 2. It's 7th over in progress. The final ball coming up. Aslam Mallah to face. As Mohsin goes for the final time onto the pad, works it down to deep scare, and he's going to retain the strike, a single of the final ball. 7 overs gone, 46 for 2. शुक्रिया फिरदौस। तो 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 42 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गांधरबल का। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। जैसा मेरे साथी फिरदौस जो है बता रहे थे कि 3 ओवर्स में 29 था स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की टीम, और 4 ओवर्स में सिर्फ जो है कुल मिलाकर 16 रन दिए। 4 ओवर्स में 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो 46 मजमूई स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। जहांगीर बजाड़ और असलम मल्ला जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं गांधरबल के लिए, जबकि हाईकोर्ट क्रिकेट क्लब के लिए एडवोकेट मोहसिन ने अपना पहला बल्कि दूसरा ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 5 रन दिए और 2 ओवर्स में 11 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। बट शोएब अमीन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ अल्फाज लिखे हैं दोनों बल्लेबाजों के हवाले से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और लाइव नशरियात में हमारे साथ बने रहने के लिए। अब देखना होगा 8वें ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया गया है और सामना करेंगे उनकी गेंद का असलम मल्ला। गालिबन जो है यहाँ पर हाईकोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की टीम ने अशरफ को लाया है बॉलिंग मार्क पर। देखना होगा क्या मोहम्मद अशरफ भी बॉलिंग मार्क पर है। और गांधरबल स्कोर है गांधरबल टीम का 46 2 विकेटों के नुकसान पर। बार एसोसिएशन गांधरबल और हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के दरमियान ये मुकाबला इस वक्त जारी। हारिस जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट शोएब अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट अशरफ को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। एडवोकेट अशरफ बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे असलम मल्ला। पारी का 8वां ओवर शुरू होने को है और फील्ड तरतीब दी जा रही है बॉलर के जरिए। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इसके अलावा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी तैनात।
46 मजमूई स्कोर। एडवोकेट अशरफ अगली गेंद के साथ असलम के लिए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद का इंतजार किया, हवा में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, क्या कैच लेंगे? जी हाँ, कैच लेने में कामयाब। तो असलम की इनिंग का खात्मा और तीसरी विकेट गिरती हुई यहां बार एसोसिएशन गांधरबल की। हालांकि जा रहा अंदाज से गेंद को खेला, लेकिन काफी ज्यादा ऊंचा शॉट और लंबाई नहीं दे पाए इस शॉट में गेंद को, और मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को कैच किया गया। तो ये तीसरी विकेट गिरी है और मजमूई स्कोर है 46 के स्कोर पर यह तीसरी विकेट गिरी बार एसोसिएशन गांधरबल की। वानी अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं कानिहामा बागम बडगाम से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए वानी अशरफ। और देखना होगा अब गांधरबल की जानिब से कौन सी टीम आई है बल्लेबाजी के लिए, कौन से खिलाड़ी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बार एसोसिएशन गांधरबल की जानिब से मोहम्मद असलम जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज देखना होगा कौन से आए हैं पवेलियन से नमूदार होते हुए। बट शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शकूर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जो है देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आए हैं जो साथ निभाएंगे यहां पर बल्लेबाज जहांगीर बजाड़ का। आजाद इशफाक आए हैं नए बल्लेबाज और सामना करेंगे मोहम्मद अशरफ की गेंद का। मजमूई स्कोर है 46, 3 विकेटों के नुकसान पर। वानी अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बडगाम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। वानी अशरफ टीम के सीनियर खिलाड़ी, बॉलिंग मार्क पर छोटा सा रनअप, बॉलिंग रनअप वानी अशरफ, ये मोहम्मद अशरफ का। एडवोकेट मोहम्मद अशरफ बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी को जो है ऑफ साइड की तरफ बुलाया गया है। अब ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। और जो 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, जो 4 खिलाड़ी है उनमें से 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात ऑन साइड पर। इस दौरान मोहम्मद अशरफ नए बल्लेबाज के लिए छोटा सा रनअप, गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब। जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47। आजाद इशफाक ने अपना खाता खोला। एक मरतबा फिर मोहम्मद अशरफ, एडवोकेट अशरफ अगली गेंद के साथ, सामने है जहांगीर बजाड़, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला है, देखना होगा, और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर। बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को खेला बजाड़ ने और गेंद सीधे 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 53, 3 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी। 53 हो चुका है मजमूई स्कोर, 8वें ओवर का खेल जारी। This one, he just comes down the wicket and lofts that one beautifully. That was a handsome stroke and nicely played off the front foot and gets it in the gap down to the mid-wicket fence for 6. Half a dozen it is, 53 for the loss of 3. Although Advocate Ashraf has got a wicket in this over, but he has conceded a 6 as well. Next ball has a gentle tap on the onside. And the batters steal a single. But Shoaib and he is mentioning we have all hopes on Ishfaq here, as 7.5 overs have been bowled and the score on board is 54 for 3, going at nearly 7 runs per over. Bar Association as Gandharbal need to find those ways of scoring runs quickly and get a good partnership here. This one is a bit quicker and flatter through the air outside off stump. As Azad Ishfaq was lining up for the cut shot, he doesn't connect at all and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 8 overs gone and Bar Association's Gandharbal batting first, 54 for the loss of 3. It's Kashmir Bar Association's Cup underway and it is match number 5 where Bar Association's Gandharbal are taking on High Court Advocates Cricket Club. So Ashraf conceded 8 in the first over, has got a wicket as well. He's got wicket of Aslam Mallah
And in the meantime, Ejaz Hajni just joined us the live broadcast and is watching us on Facebook. Walaikum salam. So you can enjoy the game on YouTube as well, JK Sports Discovery. And in case you're watching there, don't forget to press the subscribe button as well. It will be over number 9. And Azad Ashraf Jahangir Bajaj is going to face. He's batting so well on 33 as the fresh over begins. It's over number 9 from the commentary box and 54 it is with Amir Bhatt. He's watching the game live and his advocate Amir Hassan watching us from Bandipora. Welcome to the live stream, welcoming you with open heart as the bowler is just setting the field. He is busy in setting the field. I guess once again there is we got some issue in Creek Heroes. That is why it's taking a slight time. It's taking a bit time to get adjusted. And now it will be over number 9. Who has got the ball? He's got the ball in hand. 8 coming up the previous over and a wicket as well. And the Bar Association is Gandharbal. They won the toss. They decided to bat first. Doesn't start well as they lost couple of wickets quickly. And run scoring hasn't been up to the mark. You can see just going a shade under 7 runs per hour. And out of those 54 runs, you can see Jahangir has scored 33 of 21 balls with a healthy strike rate. And he's batting so well. Tanveer has got the ball in hand. And it will be Tanveer operating from the commentary box end. तनवीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। तनवीर जो है पारी का 9वां ओवर फेंकेंगे। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 54 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर बजाज 33 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे तनवीर की गेंद का। तनवीर जहांगीर बजाज के लिए बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और स्कोर में 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55। एडवोकेट तनवीर जो है बॉलिंग मार्क पर और पहली गेंद नो बॉल करार दी गई है। यहां पर जो है हाथ खोलने का भरपूर मौका जहांगीर बजाज के पास। फ्री हिट वाली गेंद होगी। छोटा सा रन अप तनवीर का। गेंद के कदमों का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा बल्ले का और गेंद को फील्ड किया गया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 56 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। 9वें ओवर का खेल जारी। तनवीर बॉलिंग मार्क पर है। सामना करेंगे अब उनकी गेंद का आजाद इशफाक। आजाद के लिए लेग स्टंप पर गेंद को खेलना चाहता, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद गई स्लिप की जानिब जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 57 3 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर अगली गेंद के साथ जहांगीर बजाज के लिए बैक फुट पर गेंद को खेला। फील्डर मौजूद दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस मरतबा रन बनाने का कोई मौका नहीं है। एडवोकेट आमिर भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं बांडीपुरा से, हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज हाजनी हमारे साथ जुड़े हैं बट शोएब आमीन के साथ, और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए विकेट कवर करके गेंद को खेला जहांगीर बजाज ने। वापस बॉलर की जानिब रन बनाने का कोई मौका नहीं। 57 3 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल जारी और बार एसोसिएशन गांधरबल को कहीं ना कहीं रन्स की रफ्तार में इजाफा करना होगा। इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 58 हो चुका है। 9वें ओवर का खेल जारी है। 58 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार अपने ओवर में अगली गेंद के साथ। छोटा सा रन अप गेंद की फ्लाइटेड, गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जानिब, पैड से टकराई गालिबन गेंद। इस दौरान रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 59 हो चुका है स्कोर बार एसोसिएशन गांधरबल का हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के खिलाफ। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजीद 11 ओवर्स का खेल आना बाकी। ये रफीक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा यहाँ पे जो है वक्फा इस लिहाज से कि दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे और एडवोकेट रफीक बल्कि एडवोकेट मोहम्मद अशरफ को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। मोहम्मद अशरफ अपना दूसरा ओवर फेंकेंगे। तनवीर ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए।
और इस मर्तबा बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीधे 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर। आपको रिप्ले में दिखाना चाहूंगा, बैक फुट पर खेला गया बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, ताकत का भरपूर इस्तेमाल और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। और ये पहला छक्का आता हुआ आजाद इशफाक के बल्ले से 65 स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामरान इकबाल हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं। फुल टॉस, एक मरतबा फिर गेंद 6 रन के लिए। देखना होगा क्या एक टप्पा, जी हाँ, एक टप्पा खाने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन को गेंद छू गई 4 रन के लिए। तो 4 रन के मजीद इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 69 हो चुका है। 2 गेंदों पर 10 रन आए हैं इस ओवर में। और ओवर जो है कितना लंबा जाएगा, कितना लंबा खींचने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि पहले ही 2 गेंदों पर 10 रन आए हैं। बड़ा अच्छा मौका यहां पर बल्लेबाजों के लिए। जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और बाहर की जानिब जाती हुई। हालांकि अंपायर की जानिब देख रहे हैं बल्लेबाज आजाद इशफाक, लेकिन अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं आया। एडवोकेट अशरफ अगली गेंद के साथ छोटा सा रन अप, गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला मोहतात अंदाज से। रन बनाने का इस मरतबा कोई मौका नहीं है। 69 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल जारी है। और एडवोकेट अशरफ जो है वो अपना इनफरादी तौर दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। बट शोएब अमीन, मीर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ कामरान इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मीर अमीन साहब, हम जो है आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है 10वें ओवर का खेल जारी और आखिरी गेंद फेंकेंगे एडवोकेट अशरफ। 1.5 ओवर में 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इस मरतबा बैट और पैड साथ मिलाते हुए बल्ले का वो बाहरी किनारा, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 70 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 70. So the halfway stage, 70 for the loss of 3, and some calculated risks taken in the previous over, a 6 and a 4, 11 runs coming off. So going at 7 runs per over and 10 overs gone, it will be as Advocate Ashraf has finished his over, he has conceded 19 runs, has been a bit expensive. And I can say there is a short little break as the officials are calling for a drinks break after the halfway stage. We talk about the game. Bar Association is Gandharbal. They won the toss. They decided to bat first, and they didn't start well. But it has been efforts from Jahangir Bajar. He's batting on 35. And Azad Ishfaq as well, he's batting on 13. A good partnership is going on between these two, and they're trying their level best to steal the show. They're trying their level best to be there, get their feet in first, get well set. And especially, the way Jahangir Bajar has played has been a fantastic innings until now. As but Shoaib Amin and Adil Bashir joined the live broadcast, talk about the game. As you can see, the players are just taking the drinks break. A slight pause, a short pause there is in the game. And we will be having a double header of Bar Association Cup, Kashmir Bar Association Cup today. But the second match will be played at Sir Sopor. And in this game, Bar Association Gandharbal are taking on High Court Advocates Cricket Club from Srinagar. 70 for 3. And still 8 more overs to go. I guess it's an 18-over game per side. And with 8 more overs to go, and they will look to accelerate. They will look to put runs on board. And anything above 160, 170 will surely be a competitive total, will surely be a good total to bowl upon. And drinks trolley is still in the middle. And there have been some good looking shots of the bat of Jahangir Bajar today. 35 of 27 bowlers, and he's been the lone warrior until now. The way he is fighting it out, he's sweating it out in the middle. And no doubt Bar Association Gandharbal, they need runs quickly, they need runs thick and fast. And that is what Shoaib was mentioning, that you just need to take your time out there, get set,
And if you get your feet in last 4 or 5 overs, you can really have a go. You can really try to fetch those big overs, fetch those runs. But at this stage, it's very important for you to stay out there. And at least up to 13-14 overs, you'll have to save the wickets and get it 7-8 runs per over. Then you can get 10-15 quite easily in those death overs, where you can have a go at the bowlers, where you can swing the bat without any fear. But if you have wickets in hand, then you can do the job nicely. There is still a pause in the game, still waiting for the officials to get play resumed, as the drinks trolley is still in the middle. 10 overs, 70 for 3. And they didn't start well, they won the toss and lost a couple of wickets quickly. And in those middle overs after the power play especially, runs were not coming. And there was a complete stoppage on runs. There was a complete full stop on runs. But then it's Jahangir Budget who is trying his level best to fetch some runs, so fetch runs quickly. And to get his team up to a respectable score. And we'll be eyeing 160-170 here with 8 more overs to go. And if they get 80 odd runs, at least 10 runs in each and every over, they can go up to a competitive score. They can go up to a above par score. That previous over fetching at least 11 runs. 19 runs has been conceded by Advocate Ashraf. So the first man to depart was Ayaz, who was trapped at LBW on 6. And the second one to depart was Altaf, who was caught by wicketkeeper on 4 of 5. Then it was Aslam Mallah, who was caught at deep mid-wicket region of the bowling of Advocate Ashraf. So you can witness the players are back into the field after the short little drinks break. And 10 overs, 70 for the loss of 3, 8 more overs to go. And surely something will be cooking in the mind of Bar Association's Gandharbal, how they bat, how they need to bat from here on. And they need to turn the corners now. It's the hi-fi time for you. Adil Bashir is mentioning it was a no ball. It was a no. What are you talking about? I guess the final delivery. And, will be the new bowler who is going to be introduced into the attack. And they're taking a lot of time now, the players. You just need to finish the game in a given stipulated time, because we have the second game as well. So you'll have to take note of that. That you just need to finish the game in a given time. So at this stage, 70 for 3 it is. And it will be the fresh over, the first over after the drinks break. And the scorecard hasn't been updated yet. The name of the bowler hasn't been updated yet. He's just setting the field, makes that long on fielder to go a bit scarer. His mid-wicket and deep backward scare leg in place. Goes with the first ball. Flights, wraps him on the pad, but he's starting down the leg side. And that is why he's bowling onto that leg stump area. That is why umpire says it pitched outside leg stump. As you can see, surely pitching outside leg. And this one again is down the leg side. The batter just tries to tickle that one fine and gets wrapped on the pads. The ball rolls to fine leg. The batter steal a single. Leg by signal there. 71 for 3. It's Tanveer Dar bowling leg spin here, and he's getting a bit of turn and grip. Flights, and he goes on the onside, taking it on the full, but manages to find the fielder and have to stay contained with a single. 72 it is. 11th over in progress as Tanveer Dar continues once again. And a bit of turn onto that. He goes off the back foot and nicely gets it in the gap towards the sweeper cover region. Again a single. Happy with the singles at this stage. Now the bowler is bowling well. You've seen a couple of deliveries turning scare, couple of bowlers just getting out turn. And that's why the batters here need to be extra cautious.
This one pushes it quicker and flatter, and the batter pushes it down to the cover region. The bowler goes quickly to stop the ball and denies any chance of a single. 10.5 overs, 73 for 3. So 3 coming off this over. It's a well set batter, Jahangir, to face the next delivery. Tries to go for the sweep and gets beaten down the leg side though. He doesn't connect at all, and umpire signals as a wide. 74 it is with a ball to go. So it's less than 7 runs per over going at this stage in the first innings. Bar Association's Gandharbal, and they will be hoping that Jahangir stays there till the end. It's outside off and driven on the up, and the cover fielder has put down the catch. Doesn't grab that one. It was a very straightforward chance to the cover fielder. He got both hands to the ball but spills that one down. 11 overs have been bowled at 74 for 3. आदिल बशीर हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ साथ बट शोएब अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मीर अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है बार एसोसिएशन गांधरबल का मजमूई स्कोर है 11 ओवर्स के बाद 74, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब तनवीर के बाद देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। जहांगीर बजाड़ ने 36 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किया, जबकि आज़ाद इशफाक ने 14 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए। और बॉलिंग मार्क पर जो है एडवोकेट इरफान को लाया गया है, सामना करेंगे उनकी गेंद का आज़ाद इशफाक बल्कि, और आज़ाद इशफाक बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए। इरफान छोटे से रनअप के साथ गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है, उस और फील्डर मौजूद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद को रोकने की कोशिश। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी मुकम्मल। तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रन के साथ 76, 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदों पर 30 रन की शराकत दारी हुई है आज़ाद इशफाक और जहांगीर बजाड़ के दरमियान। अगली गेंद ओवर द विकेट इरफान, गेंद को खेला बैक फुट पर, विकेटों में आती हुई गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला, फील्डर मौजूद पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। यह पारी का 12वां ओवर जारी है, 76 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। एडवोकेट इरफान जो है बॉलिंग मार्क पर है। अगली गेंद बैक फुट पर, गेंद को खेल दिया, उस और स्लिप की जानिब, फील्डर मौजूद, बिल्कुल जो है दायरे पर गेंद को फील्ड किया गया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 77 हो चुका है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल जारी, पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में बार एसोसिएशन गांधरबल का और हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के साथ जो है इस मुकाबले में नबरद आजमा। इरफान, एडवोकेट इरफान अपना पहला और पारी का 12वां ओवर फेंक रहे हैं, सामना करेंगे जहांगीर बजाड़। गेंद की बैक फुट पर, गेंद को निकाल दिया, फील्डर मौजूद 30 गज दायरे पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, गली में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 77 मजमूई स्कोर, बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को, और कोई आजादाना स्ट्रोक खेलने की जो है उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अगली गेंद, इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, और गेंद जो है स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एडवोकेट इरफान बॉलिंग मार्क से हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की जानिब से। सामने है जहांगीर बजाड़ जिन्होंने 36 रन बनाए 32 गेंदों का सामना करते हुए। बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, खेलते ही दौड़ पड़े, हालांकि फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 ओवर्स के इख्तिताम पर 78, 3 विकेटों के नुकसान पर। हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब की जानिब से 12वां ओवर फेंका इरफान है, जिसमें उन्होंने 4 रन दिए। आरिफ हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, वुलर प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला जो कि अंबरपोरा स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेला जाएगा। बट शोएब अमीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डार कयूम भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ आदिल बशीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ देखना होगा अब किस गेंदबाज को बुलाया गया है। एडवोकेट इरफान ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। एडवोकेट बार एसोसिएशन गांधरबल का स्कोर है 78, 3 विकेटों के नुकसान पर।
ये कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप का अहम मुकाबला और इसे ऑर्गेनाइज किया एडवोकेट आजम पंडित, जबकि उनका साथ दे रहे हैं एडवोकेट हिलाल अहमद और बिलाल अहमद और भी कुछ साथी है। इस दौरान जोरदार अपील, लेकिन नकारा अपील को अंपायर ने, कोई नुकसान नहीं और महफूज क्रीज में जहांगीर बजाड़ 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 34 गेंदों का सामना किया जहांगीर बजाड़ ने। एडवोकेट तनवीर अगली गेंद के साथ ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, एक मरतबा फिर पैड से टकराई गेंद, लेकिन गेंद जो है लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसा इशारा दिया अंपायर ने, कोई नुकसान नहीं। 78 3 विकेटों के नुकसान पर तनवीर छोटे से रनअप के साथ एक मरतबा फिर गेंद की, इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। एक टप्पा खाने के बाद गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर रन मुकम्मल किया। 1 रन का इजाफा, 79 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बढ़ता हुआ। 13वें ओवर का खेल जारी। तनवीर अगली गेंद के साथ, इस मरतबा आजाद के लिए गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जाने, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर का खेल जारी। 12.4 ओवर्स के बाद 81 स्कोर बोर्ड है बार एसोसिएशन गांधरबल का। तनवीर अहमद ओवर में 5वीं गेंद के साथ। आरिफ हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हुसैन जुड़ने के लिए। अगली गेंद फ्लाइटेड, गेंद का इंतजार किया, गेंद को खेल दिया कवर की जानिब, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। तो मजीद 1 रन का इजाफा स्कोर में, अब 80 स्कोर बढ़ता हुआ बल्कि 82 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे तनवीर अहमद। जॉन मोहम्मद रजा इस दौरान हमारे साथ कानिस्पोरा बारामुल्ला से जुड़े हैं। वहां पर स्टंप्स बिखेरी विकेट कीपर ने, लेकिन कोई यहां पर क्या आउट हुए हैं ये देखना होगा। हालांकि विकेट अंपायर जो है वो कुछ इशारा दे रहे हैं, गालिबन पांव जो है वो पहले ही छू गया था, ऐसा इशारा दिया अंपायर ने, तो आउट करार दिया गया है। यहां पर हिट विकेट हुए हैं बल्लेबाज जहांगीर बजाड़। जहांगीर बजाड़ जो है वो हिट विकेट आउट हुए हैं। एक मरतबा फिर जो है आपको रीप्ले में रियल टाइम में दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा क्लोज एंगल से कि क्या मामला यहां पे बना और किस तरह से हिट विकेट आउट हुए। आपको दोबारा से रीप्ले में दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं रियल टाइम में किस तरह से आउट हुए। स्टंप आउट करार दिया गया है और आउट होकर पवर लाइन वापस जाते हुए दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से आउट हुए हैं। स्टंप आउट हुए तो इस तरह से। ये बशीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जॉन मोहम्मद रजा, तो चौथी विकेट गिरी बार एसोसिएशन गांधरबल की 82 के मजमूई स्कोर पर। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। It's been a fine performance from High Court Advocates Cricket Club Srinagar. As you can see, 13 overs have been bowled. The run rate is just over 6. They got 4 wickets and it's a well set batter, Jahangir Bajad, who has to walk back. He's been stumped. That was an electric work behind the stumps by the wicket keeper. 82 for the loss of 4. 82. Throwa. 82 for the loss of 4 it is after 13 overs. So just 5 more overs to go now from here on. And Tanveer has bowled it really well. 3 overs, 1 for 11. It has been a fantastic display of bowling. Zubair Tantri and Bashir Ahmed. John Mohammad Raza are enjoying the game. It's Bar Association's Cup where Bar Association Gandharbal are facing locking horns against High Court Advocates Cricket Club. So Advocate Irfan Ali has been introduced into the attack and Azad Ishfaq is going to face him. He's bowled a good first over and the first ball guides it on the offside with an open face off the bat, and they quickly cross for a single. Takes them to 83 for the loss of 4. It's been a fascinating session of play, hasn't been a superb session of play for High Court Advocates Cricket Club, the way they bowled and haven't let Bar Association's Gandharbal
to use the conditions or to capitalize on the conditions. Has been a good batting surface, but the bowlers have been extraordinary with the ball. And now takes a couple of steps down the wicket is Ganderbal Ali, who is just arrived to the crease, who's a newcomer, and tries to take on the bowler from the very word go, from the very first ball, but doesn't connect at all, and goes into the gloves of wicketkeeper. Over number 14 is in progress. His next ball dug in short and hammered away on the onside into the fine leg fence for 4. Boundary after a very long time. That was a bad delivery and needed to be punished, and surely punished by the batter. Pulses it on the onside and gets it well in the gap between the fielders and gets a boundary. Off the mark is Ganderbal Ali, and he's trying his level best to up the ante. He's trying his level best to accelerate the innings, and that was evident, his mindset. In the first ball he tried to go for the big shot, doesn't connect, and second ball he is successful there, gets a boundary. Irfan goes with the fourth ball over the stumps, and this is up in the air, could be a chance. The fielder settles under and he grabs that one with ease. Ganderbal departs, tries to go for the big shot, lofts this one in the air, and mid-wicket fielder completes the catch. He has to walk back. Ganderbal departs as well. It's 87 for 5. He was trying to up the ante, he was trying to accelerate, he was trying to get that run rate up, but this time a lack of timing, doesn't get to the pitch of the ball, gets it more height onto that one, not to the distance, and mid-wicket fielder stationed there, grabs that one easily straight down to the throat of the fielder. 87 for 5. Ganderbal goes on 4. A short stay comes to an end with Mahmood Ahmed Ganai sending in Lau and Bashwaib. Ganderbal Ali, he's a power hitter off the ball, but unfortunately he is back to the pavilion. He's back, he walks back, and I can say 87 for the loss of 5. Has been a great day for High Courts Cricket Club. The way they bowl it, the previous delivery was shot down the leg side, and the batter picking that one nicely and picks the bones out of that, but on to the next ball he strikes, and he has his revenge. He has the last law of Irfan, 1 for 9 in his spell, and Adil Bashir is mentioning, he just writes down that they need to stop playing aggressive shots, and they said until that 14th, 15th over they needed to stay there, and they could have gone really hard at those last 3 overs, but now trying to fetch some runs quickly, trying to get those big overs, but in the meantime it's always a high risk option, and they lost 2 wickets in the meantime. The new batter Khurshid Rathar is in, and Irfan Ali has bowled really well. The bowlers have bowled definitely well today, and they have surely haven't let the batters to score freely, or they haven't let the batters to go hard at them. It's 14th over in progress. 4 more overs left after that. Khurshid Rathar to face Irfan for the first time. He's just setting the fielder now. On the onside, 3 men at the boundary, square leg, mid-wicket and wideish long on. He has fine leg in place, so 4 fielders are on the onside, 5 on the offside. As he goes outside off stump, chops it onto the offside, will get a single as the ball rollers away to deep cover. There is protection, and they are happy with a single as Khurshid Rathar gets off the mark. 88 for the loss of 5, and it's Azad Ishfaq to face, who is batting on 21. The final ball of 14th over, and it's a good stuff, wicket to wicket stuff, direct hit and gone. There was never a run, and it's an absolute suicide there by Azad Ishfaq, and look at that, how tamely he was running. He was indolent, and that is a superb effort by the cover fielder. Bang on target he is, catches batter well short of the crease. He was halfway down and has to walk back to the pavilion. Catches him short, hits the bullseye, and one more bites the dust, another one departs. 6th one goes down, 14 overs gone, 88 for the loss of 6. As taking a look at the close-in angle,
As you can see, Ishfaq was trying to steal the non-existent run. It's a suicide done by the batter there. And you can see he was trying to get the single. Defenders, tap and run, he was trying to do that. And look at that, direct hit, and he is nowhere near to the crease. He is surely shot up the ground. And 6 wickets down. What a display this has been. Quality stuff with the ball, quality in the field, and they are bossing the game completely. A terrific session of play. 14 overs gone, 88, 6 down now. तो 6 खिलाड़ी पावर लाइन वापस जा चुके हैं बार एसोसिएशन गांधरबल के। स्कोर है 88। बट शोएब अमीन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आदिल बशीर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और 88 मजमूई स्कोर। अभी यहाँ से जो है 6 ओवर्स का आना बाकी। क्या मजीद जो है 6 ओवर्स में 50 या उससे जायद रन आ जाते, एक अच्छा टोटल खड़ा हो जाता है हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के लिए, ये देखना होगा। बॉलिंग मार्क पर तनवीर को लाया गया है। 15वें ओवर की पहली गेंद नए बल्लेबाज के लिए इशफाक डार और खुर्शीद राथर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इशफाक डार अभी आए हैं, एक गेंद का सामना किया, खाता नहीं खोला अपना इशफाक डार ने। 88 स्कोर 6 विकेट 88 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर तनवीर अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे। पारी का 17वां ओवर। तनवीर छोटे से रनअप के साथ एक मतबा फिर सामना करेंगे उनकी गेंद का इशफाक डार। इशफाक के लिए छोटे से रनअप के साथ ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फ्लाइटेड ऑफ साइड की जाने हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन महफूज शॉट और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर अब ओवर थ्रो की सूरत में क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, 1 रन का इजाफा। 89 स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी। इसके बाद मजीद 5 ओवर्स का आना बाकी और यहां से कहीं ना कहीं विकेट भी बचानी होगी और रन्स की रफ्तार में भी इजाफा करना होगा। बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा और खुर्शीद राथर सामना करेंगे तनवीर की गेंद का। गेंद के हवा में खेला गया स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बिल्कुल थर्ड मैन गेंद के नीचे, और उन्होंने गेंद को कैच करने की कोशिश की लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ। यहां पर आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे किस तरह से कैच लेने गए थे, लेकिन आखिरी लम्हात पर जो है हाथों से छूट गई गेंद और 90 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर अब सामना करेंगे इशफाक डार। इशफाक डार ने 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया। 90 मजमूई स्कोर बार एसोसिएशन गांधरबल का 6 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी। 15वें ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगे तनवीर और सामना करेंगे उनकी गेंद का इशफाक। ऑन साइड पर एक और खिलाड़ी को तैनात किया गया है शॉर्ट फाइन लेग पर। अब ऑन साइड पर 4 और ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। छोटा सा रन अप फ्लाइटेड ऑन साइड पर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप से बाहर गेंद और स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 91 6 विकेटों के नुकसान पर। एम इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम इकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट शोएब अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद इशफाक डार के लिए तनवीर अहमद बॉलिंग मार्क से छोटा सा रन अप, अंपायर को क्रॉस किया, फ्लाइटेड गेंद की और फुल टॉस, हवा में खेला गया स्ट्रोक। क्या कैच लेंगे? बड़ा खूबसूरत कैच, क्या कैच हासिल किया है यहां पर खुद ही अपनी गेंद पर तनवीर अहमद ने। बड़ा खूबसूरत कैच, हालांकि ऐसा लग रहा था कि गेंद जो है जमीन को छू जाएगी, लेकिन आखिरी लम्हात पर फुल लेंथ डाइव लगाकर कैच हासिल किया। बिल्कुल जमीन पर जाती हुई गेंद को अपने हाथों में कैद किया और यहां विकेट गिरती हुई इशफाक की। तो इस तरह से ये 7वीं विकेट गिरी बार एसोसिएशन गांधरबल की 91 के स्कोर पर और तनवीर ने कॉट एंड बोल्ड किया यहां पर इशफाक को। और कुल मिलाकर जो है तनवीर के खाते में जाने वाली ये दूसरी विकेट जाती हुई 3.4 ओवर में 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। नफीतुली गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए तनवीर अहमद इस मुकाबले में। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोहम्मद एम इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं बाकीपुरा रफियाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बार एसोसिएशन गांधरबल की टीम जो है
वो बैकफुट पर खड़ी है। 91 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं एडवोकेट सज्जाद खान। एडवोकेट सज्जाद खान जो है वो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सज्जाद सामना करेंगे। ऑफ स्टंप पर गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता गली में रन बनाने का कोई मौका नहीं। एडवोकेट सज्जाद खान जो है वो एक मतलब फिर तनवीर की गेंद का सामना करेंगे। तनवीर अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ। तनवीर की गेंद फ्लाइटेड, गेंद का इंतजार किया, बैक फुट पर खेलने की कोशिश नाकाम। गेंद जो है ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से कामयाब स्पेल जो है तनवीर अहमद का मुकम्मल होता हुआ। 4 ओवर किए, 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहाँ एम इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। फेसबुक पर 91 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल। बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा किया इस पूरे मुकाबले में हाईकोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की टीम ने। अब 16वें ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया गया है आपको जरूर जो है जानकारी देंगे। तनवीर ने 4 ओवर किए, 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की तनवीर अहमद ने। खुर्शीद रातर और एडवोकेट सज्जाद खान इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग मार्क पर है एडवोकेट इरफान ने 2 ओवर किए, 10 रन दिए और पारी का 16वां ओवर फेंकेंगे। इनफरादी तौर उनका तीसरा ओवर। सामने है खुर्शीद रातर टीम के कप्तान। एडवोकेट बार एसोसिएशन गांधरबल टीम के कप्तान गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए बल्कि मिड विकेट बाउंड्री से और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड किया गया 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ 92 स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेटों के बल्कि 7 विकेटों के नुकसान पर। एडवोकेट इरफान ओवर में अगली गेंद के साथ सामना करेंगे इस मरतबा सज्जाद खान। गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है उस और फील्डर मौजूद दी बैकवर्ड पॉइंट पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बना, दूसरे रन के लिए गए हैं और इस दौरान डेड बॉल का इशारा आता हुआ गालिबन अंपायर की जानिब से। क्या डेड बॉल का इशारा आया है या फिर 4 रन का इशारा, ये देखना होगा। तो गालिबन गोल पोस्ट को गेंद टकरा गई है, उस वजह से डेड बॉल करार दिया गया है। दोबारा से इस गेंद को फेंकना होगा और ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 92 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। इरफान बॉलिंग मार्क पर। 16वें ओवर का खेल जारी। अबूदुजान बहुत बहुत शुक्रिया मेरे होम टाउन से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैच इस वक्त जारी है एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में। अगली गेंद के साथ एडवोकेट तनवीर। गेंद की इस मरतबा गेंद को बैक फुट पर खेला। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। बार एसोसिएशन गांधरबल और हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के दरमियान यह मुकाबला जारी कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप के तहत एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में। 93 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर गांधरबल एडवोकेट बार एसोसिएशन का और तनवीर है बॉलिंग मार्क पर। गेंद की हवा में खेला गया, बल्ले का बाहरी किनारा, उस और फील्डर कोई तैनात नहीं और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। तो 4 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 97 हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर का खेल जारी। 13वें ओवर का खेल जारी। 97 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। यह बल्कि 16वें ओवर का खेल जारी है। अबूदुजान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है 97 स्कोर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अब आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 98 7 विकेटों के नुकसान पर। 16वें ओवर की 5वीं गेंद को दोबारा फेंकना होगा एडवोकेट इरफान को। एडवोकेट इरफान 16वें ओवर की 5वीं गेंद के साथ एक मरतबा फिर सामना करेंगे खुर्शीद रातर जो कि बार एसोसिएशन गांधरबल टीम के कप्तान भी है। अबूदुजान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं एम इकबाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। इरफान अगली गेंद के साथ छोटा सा रन अप ओवर द विकेट। गेंद की ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, उछाल लेती हुई गेंद, क्या वाइड करार दिया जाएगा? जी हां, वाइड करार देते हुए इस गेंद को अंपायर और एक मरतबा फिर जो है 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ
गालिबन 99 हो चुका है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जी हाँ, 99 हो चुका है स्कोर। 7 विकेटों के नुकसान पर 5वीं गेंद 16वें ओवर की एक मरतबा फिर फेंकेंगे इरफान। छोटा सा रन अप, गेंद की इस मरतबा बल्ले और गेंद के दरमियान सही कनेक्शन, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई, इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 99 हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद और गेंद को खेलने की कोशिश जारहाना अंदाज से, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। बार एसोसिएशन गांधरबल का स्कोर 99, 7 विकेटों के नुकसान पर। 7 down on 99 after 16 overs, so just 2 more overs remaining in the first innings, and we'll have to wait and watch how many more can they add to this tally, and can it go up to 120, 130. But doesn't seem to be. It's a good score on board. They are surely lagging behind in the batting department, as they lost wickets at regular times and they lost wickets at regular intervals, and that is why they have been completely put on a back foot, and there hasn't been that good show with the bat at all today. We'll have to wait how these two, with those 2 more overs left. It's Khurshid Rathar, the captain, batting out there on 8 of 5, and Advocate Sajjad Khan is giving him the company. Arif Skandar will be bowling the penultimate over. Abudujan and But Sidra, walaikum salam, she's watching us on YouTube, and in the meantime Arif Skandar is just having a word with the umpire there. The fielders on the boundary line on the onside. Skalak boundary is patrolled by the fielder. He is mid-wicket at there is long on as well. Onside is completely packed on the boundary ropes. He has fine leg in place inside the ring, trying to save the single. And on the offside, long off, there is mid-off in place. Deep cover is out. Third man is in, and he has backward up point in place. So the viewers who are watching on us YouTube and Facebook, thank you very much for joining. In the meantime, first ball of the fresh over, trying to cover the stumps, gets wrapped on the pads, and up goes the finger. Umpire this time had no hesitations at all. That was a nothing shot by the batter. As you can see, he was just going off the back foot, wraps him on the pads, and is found right in front of the stumps by the umpire. And he raises his finger, no doubts whatsoever, and one goes down as well. It's wicket number 8 which departs, which falls, and sinking further here the ship of Bar Association is Gandharbal, as they lose wickets at regular intervals. One more bites the dust as he walks back to the pavilion, and umpire this time has no hesitations. And look at that, he was just covering the stumps, trying to flick the ball, but doesn't get it off the bat, misses it altogether, and is found dead in front of the stumps. 99 for the loss of 8. This has been a quality display of bowling. Has been a fantastic phase of those 15-16 overs for Advocates of High Court. It has been a fantastic show with the ball. Arif Skandar gets his second of the day. He's in his final over as well. 2 for 22. And the captain using his resources, the captain using his bowlers, and they have replied well. They have lived up to the expectations of the captain, and they have delivered the punch at the biggest stage. They have risen to the occasions. In the meantime, the new batter walks in, Raja Fayaz it is, and he faces the first ball wide outside off stump, tries to go for the drive, doesn't connect at all. And Sidra is mentioning he is out, and that is what umpire suggested. And Sidra, you're spot on there. Sikandar goes once again. Top edge, flies over third man into the fence for 4. Isn't convincing one at all, but they will take it no matter where the runs come from, but they need those runs. He was a bit short, he was trying to go onside, gets the thick top edge, and wicket keeper had no chance. He just watches the ball go over his head into the third man boundary for 4. And the match between Bar Association's Gandharbal and High Court Advocates Cricket Club Srinagar. This one is up in the air,
again beats third man and trickles into the boundary for 4. Now these are vital runs, crucial runs for Bar Association's Gandharbal. Even though the batter doesn't know where he is hitting, where the ball is going, but surely taking those runs. Edges are running into the boundaries. It's working nicely. It's working wonders for Bar Association's Gandharbal. Hope you got the information, Sidra. It's Advocates Cricket Club Srinagar taking on Bar Association's Gandharbal. And back-to-back boundaries. 8 coming off first 4 bowlers. 16.4 overs have been bowled. And it's 107 for the loss of 8. Amir is watching us from Amir Hardware, Rohama. Walaikum Salam. Yawar Muhammad is watching as well. Walaikum Salam, brother. Once again, beautifully executed in the gap. Straight over the bowler's head and hat-trick of fours. That is fantastic display of batting. Raja Fayaz gets one into the slot. This was in the slot. And he goes bang over the bowler's head. Long on had no chance at all. He tried his level best, but he was just a spectator as the ball crosses the fence within no time. It's Nelson on board. Final ball. And he gets it on the onside. 4 more. Onto the pads. And he lifts that one away. Terrific strike. 4 boundaries of 4 bowlers. And that is where Bar Association's Gandharbal have done a nice little job. 17 overs gone. It's 115 for the loss of 8. It's Mushtaq Lun enjoying the game. This over has surely given something, some momentum to the batting of Bar Association's. 16 coming off this one. And it will be the final over where Advocate Irfan Ali will be bowling. And Samar Bilal, thank you very much for joining. And he is mentioning that just the way you are getting that energy into the game. And 4 boundaries scored off 4 balls by Raja Fayaz. And he is striking at nearly 330. It will be the final over of the first innings. And Advocate Mohsin has got the ball in hand. And he goes over the stumps. Off the back foot goes the batter, pushes that one on the offside, sets off for a single. I guess in case if this is an 18 over game per side, this will be the final over. So it's a 20 over game per side to be precise, and this one is a bit fuller, driven to wideish long off, and they're happy with the single. And it's a good batting display in those last couple of overs. We've seen the previous over, they got a couple of fours. In fact, they got 4 boundaries of 4 bowlers. And we still are in over number 18 as Mohsin goes once again to Raja Fayaz. And it's down the leg side, will have to re-bowl it. It's a wide. And has surely given some moment in those last couple of overs. 16 coming up the previous over. 4 of first 2 bowlers in this one. So it's 119 for the loss of it. They should have gone for the kill. I said they should have gone to get them all out, to bundle out the innings. But Raja Fayaz had some other ideas. He had some other plans as he faces the next delivery of Mohsin. And he tries to go onside. Doesn't time it well. And he gets it off the splice of the bat to the fine leg as they steal a single. It's 120 for the loss of 8. And Amir Shafi is mentioning this Eden Park Amity ground. It's a batting paradise due to its short boundaries. You know that mid-wicket area is a bit long. The rest of the boundaries are a bit short. And it's not only talk about the dimensions here. The wicket is full of runs because you see it's hard wicket, it's a hard surface, and the ball comes nicely onto the bat, and the batters will definitely love to bat here. And Yawar Muhammad is mentioning we have a final today. Royal Goodwill taking on Murad 7th Street at Amberpura. I don't have the information regarding that. I guess that is scheduled for today and will commence shortly. Amir Shafi. And it was a poor batting display, and definitely I am on board with you. I do agree with that. As Gandharbal Bar Associations, they were not able to bat well. The final ball of over number 18 coming. Fuller, and he was trying to drive it. Gone into the gloves of wicketkeeper
18 overs have been completed. It's 120 for the loss of 8. आमिर शफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 120, 8 विकेटों के नुकसान पर बार एसोसिएशन गांधरबल का स्कोर हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के खिलाफ। तो कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल बाकी, 2 ओवर्स का आना बाकी है और इन 2 ओवर्स में मजीद कितने रन जुड़ जाएंगे स्कोर बोर्ड में और क्या टोटल यहाँ पे खड़ा होता है ये देखना होगा। बार एसोसिएशन गांधरबल का स्कोर 120, 8 विकेटों के नुकसान पर। अब महराज को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। 3 ओवर की अब बार खेला जाएगा और उसकी लाइव नशरियात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मंजीर में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप का। कामरान इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 19वें ओवर का खेल जारी। महराज है बॉलिंग मार्क पर। ओवर द विकेट, गेंद के ऑप्शन से बाहर और गेंद को जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश नाकाम रहे। ऑप्शन से थोड़ी बहुत बाहर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 120, 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल जारी और मजीद कितने रन आ जाते हैं ये देखना होगा। महराज ओवर में अगली गेंद के साथ। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल पहली पारी में बाकी। एक मरतबा फिर डॉट गेंद। 19वें ओवर में 2 मुसलसल डॉट गेंदें फेंकने में कामयाब अभी इस ओवर में महराज। कामरान इकबाल, डार जावेद, आमिर शफी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अगली गेंद के साथ महराज, छोटा सा रन अप ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब लेकिन फील्डर मौजूद। शॉट स्केल पर जब तक गेंद को शॉट मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121, 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल जारी। एडवोकेट सज्जाद खान और राजा फैयाज जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सज्जाद खान सामना करेंगे महराज की गेंद का। महराज अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। इस मतलब बैक फुट पर ऑफसाइड की तरफ गेंद को खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 122 स्कोर बढ़ता हुआ। यहां बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा रन्स के लिए जाना होगा। जितने ज्यादा रन्स आ जाएंगे और टोटल जो है उतना अच्छा खड़ा होगा हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के लिए। अगली गेंद के साथ महराज, ओवर द विकेट, गेंद की इस मरतबा उछाल, पटकी हुई गेंद और क्या वाइड करार दिया जाएगा गेंद को? जी हाँ, वाइड करार देते हुए लेग अंपायर और स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 123 हो चुका है 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदों का खेल पहली पारी में बाकी। ओवर की 5वीं गेंद फेंकेंगे महराज, सामना करेंगे उनकी गेंद का राजा फैयाज। मीर शब्बीर इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं शेख हारून के साथ। अगली गेंद और इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद गेंद के नीचे लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर यह कैच ड्रॉप होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 125। ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे, बल्कि अपने ओवर की नहीं कोटे की आखिरी गेंद फेंकेंगे समीर। एक मरतबा फिर और इस मरतबा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो इस तरह से ये विकेट गिरते हुए 9वीं विकेट गिरी है। 9वीं विकेट गिरी है। राजा फैयाज आउट होकर पावर लाइन वापस जाते हुए लॉन्ग ऑफ पर उनका कैच लिया गया और महराज के खाते में जाने वाली पहली विकेट। 4 ओवर किए, 17 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 125 मजमूई स्कोर बार एसोसिएशन गांधरबल का 129 है, बल्कि 9 विकेटों के 125 9 विकेटों के नुकसान पर। मीर शब्बीर, शेख हारून और समर बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान इकबाल भी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 125 मजमूई स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर और पहली पारी का अब आखिरी ओवर फेंका जाएगा और बार एसोसिएशन गांधरबल की आखिरी जोड़ी मैदान में। एडवोकेट सज्जाद खान और उमर अली आखिरी जोड़ी मैदान में है। उमर अली नए बल्लेबाज आएंगे और सामना करेंगे यहां पर एडवोकेट मोहसिन को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, जो कि
अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकेंगे। इससे पहले 3 ओवर किए, 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की एडवोकेट मोहसिन ने। मोहसिन बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार और सामना करेंगे उनकी गेंद का सज्जाद खान, एडवोकेट सज्जाद खान। यह पहली पारी का आखिरी और 20वां ओवर, 125 मजमूई स्कोर। मोहसिन गेंद की बोल्ड कर दिया है और इस तरह से 125 रन पर पूरी टीम सिमट गई। 19.1 ओवर में बार एसोसिएशन गांधरबल की और हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब को 126 रन का हदफ मिला है। मुकर्ररा 20 ओवर्स में जैसे ही दूसरी पारी का आगाज होगा, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the run chase of High Court Advocates Cricket Club. They are chasing 126 runs in their allotted 20 overs to win the game and to book their place into the next round. And all set to go. Here is the first ball of the chase. Starts down the leg side. Starts with a terrible delivery. It's a wide signal and they steal a single. So there was a slight issue and it has been sorted out. Now it's working very well, it's working fine. With 2 runs on the board in over number 1, the chase of 126. As it was next delivery, capped a bit low. There was an uneven bounce onto that one as he tries to guide it, steer it to third man area and doesn't connect at all. And the ball goes into the gloves of wicket-keeper Faisal Shabir and Latif bin Hamid are watching the game. Thank you very much. Latif bin Ahmed Raja it is. Are enjoying and watching the game live and exclusive on Global News Network on Facebook and JK Sports Discovery on YouTube. In the meantime, Khurshid Rathar goes again, short and wide outside off stump. He tries to bang that one shot and a gentle bounce onto that. He was trying to ride it nicely to steer it down to third man, but it doesn't connect. There is no connection with the bat at all, and once again the ball goes into the gloves of wicketkeeper. Remember, they're chasing a modest target of 126 to steal the next spot of Bar Association's Cup. Oh, that's a good ball. That is a fantastic delivery as he forces the batter to be off the front foot, to drive me off the front foot, and then
tails the ball and it gets away from the right-hander and goes very close to the outside edge and into the gloves of wicketkeeper. It's 2 without loss. A fantastic over until now. Khurshid is definitely asking those questions with the ball. Has been excellent with his lines and lengths for 5 bowlers and have yielded just 2 runs as he goes for the final time. Again, a good delivery onto that off-stump line. The batter was trying to cover the swing, gets beaten, and he at the last moment hides his bat and lets it go to the wicketkeeper. We're done with over number 1, and High Court Advocates Cricket Club have started in a cautious note, 2 without loss, chasing 126 runs. Good start, fairly good start for Bar Association's Gandharbal, as Khurshid Rathar bowling that first over, and straight away he was spot on. He was bowling that length where he can keep the batters very quiet, and he has been able to do so in the first over and hasn't let Pir Majid or Miraj to go for the big shots. Even hasn't let Pir Majid or Miraj to get going in the very first over. A good start for Bar Associations, and that's what they need. And more importantly, they'll have to pick wickets up front to defend 126. They'll have to do an extraordinary stuff with the ball. And Sajad Khan has been introduced to bowl the second over off the chase. Mehraj will be on strike. You can see Pir Majid facing all those 6 deliveries, and he was all over the sea. Again, is Khurshid, who was bowling so well. It's been a good spell. He's been a good first over for Bar Association's Gandharbal. And whole lot lies on the bowling department. You're defending 126, not always easy, but those low scorers can be tricky. And first ball of the fresh over, he waits for the ball to come, and the last moment he just guides it down to third man and gets off the mark with a single. Takes the score to 3 without loss. 126 is what they need to get to chase down to carry the day and to go into the next round. And it will be tough for the bowlers of Bar Association's Gandharbal. You're defending just a low target, and it's all about the bowling, and they'll have to bowl really well. And onto the pad is worked away to fine leg. There is a fielder inside the ring, and there won't be a chance of a run. Pir Majid is surely struggling. As we can see, he has faced 7 bowlers, hasn't got off the mark yet. And he just needs to rotate the strike if you're not getting those big shots. You just need to rotate the strike, work the ball in the gaps. That is where you can get the confidence. That is where you can be back into the game. As Sajad goes to Pir Majid, and this one is on to the pads, and it goes down the leg side, has been signalled as wide. Tariq Abdullah is watching us from Alusa, Bandipora, and you can watch it on YouTube as well. You just need to search JK Sports Discovery. So second over in progress, 4 without loss. Sajad Khan gets ready once again to Pir Majid. Over the stumps he goes, away from us. And chipped in the air, but down to long on. There is protection, and he'll have to stay with a single. And off the mark, he is finally with a single. And it takes the score to 5 without loss. Need to be cautious at the start with a new ball, where you can see there is a bit of help. There is bit aid for the bowlers. So you just try to see off that spell of that new ball, and then if you get couple of little partnerships, and small partnerships can do the job for you chasing 126. It's a chaseable score, but you need to bat well. You need to bat with cautiousness. Sajad goes again, and short and wide, tries to cut that, gets an edge, and it trickles to third man boundary for 4. Big top edge, it rolls down to the boundary. First boundary for High Court Cricket Club. It's a boundary, takes them to 9 without loss. Imtiaz Chauhan and Tausif Manzoor, but and best of luck my team, High Court Cricket Club Srinagar, and today gonna win the game. And Sophie Feroz, Advocate Sophie Feroz, is the president of District Bar Association's Bandipora, and he is just supporting the game and wishing best of luck for both the teams. Sending in love from Bandipora, and been the vital part of this tourney as well. Next ball,
and pushes it back to the bowler. Doesn't time it well as he pushes it back to the bowler. There is no addition to the total. He was trying to drive the ball on the up, and he only manages from the half of the bat back to the bowler, and there is no chance of a run. A watchful start. Sajjad goes again and chips it back, and just short of the bowler. That was tamely pushed, and lobs up in the air, was bit uppish as the bowler dives forward to take the catch, but cannot make it do. Was a half chance and needed to convert that into a full one. And lucky is the batter, he survives. 2 overs gone and it's 9 without loss. सूफी फेरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांडीपोरा के प्रेसिडेंट है और इस वक्त जो है हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एडवोकेट हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब को जो है रन्स दरकार 126 मुकाबला जीतने के लिए। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 9 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के। पीर माजिद और महराज जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के लिए, जबकि बॉलिंग मार्क पर बुलाया गया है अब खुर्शीद राथर। पारी का तीसरा ओवर फेंकेंगे। इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर, गालिबन टीम के कप्तान भी है और पहले ओवर में 2 रन दिए खुर्शीद राथर ने। तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अब आता हुआ अंपायर की जानिब से और स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 10 बिना किसी नुकसान के। 10 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब का और रन्स दरकार मुकाबला जीतने के लिए 126 रन्स। खुर्शीद राथर आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस आते हुए, टीम के सीनियर खिलाड़ी और कप्तान भी है टीम के खुर्शीद राथर। एक मरतबा फिर ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑप्शन से बाहर और हवा में खेला गया स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री को छूती हुई, देखना होगा क्या रोक पाएंगे। रोकने की अच्छी कोशिश, क्या रोकने में कामयाब हुए हैं ये देखना होगा। इस दौरान 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 12 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, पीर माजिद और महराज के दरमियान। पीर माजिद एक मरतबा फिर सामना करेंगे खुर्शीद राथर की गेंद का। खुर्शीद राथर टीम के कप्तान, गांधरबल टीम के कप्तान, एक मरतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ खुर्शीद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। रन के लिए दौड़ पड़े हैं, मिड ऑफ पर फील्डर तैनात, लेकिन रन मुकम्मल होता हुआ मजीद 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और एडवोकेट सूफी फेरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ मंजूर भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक हाई कोर्ट श्रीनगर के लिए लिख रहे हैं और कुल मिलाकर 126 रन दरकार हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब को मुकाबला जीतने के लिए। बार एसोसिएशन गांधरबल की जानिब से खुर्शीद राथर बॉलिंग मार्क पर। तीसरा ओवर पारी का जारी, गेंद की ऑप्शन से बाहर और बाहर की जानिब और विकेट कीपर सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। 22 की सूरत में ये 4 रन हासिल होते हुए और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी, 17 मजमूई स्कोर। पंजाब से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। मुकाबला इस वक्त जारी एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में। अगली गेंद के साथ पीर माजिद के लिए, गेंद की विकेट में आती हुई गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद 30 गज दायरे के अंदर, गेंद को फील्ड किया गया। पॉइंट पर रन बनाने का इस मरतबा कोई मौका नहीं। आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा कि ये कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप के तहत खेला जाने वाला 5वां मुकाबला है और मुकाबले में बार एसोसिएशन गांधरबल और बार हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले। इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को मोड़ दिया है, 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे स्केलर बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21। पीर माजिद के बल्ले से आने वाला यह चौका, उनका इनफरादी स्कोर हो चुका है 9, जबकि मजमूई स्कोर हो चुका है 21।
एजाज अहमद तांतरे इस दौरान मेरे होम टाउन से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। 21 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब का, जिन्हें दरकार 126 रन, अभी भी 105 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। तीसरे ओवर का खेल जारी है। खुर्शीद अगली गेंद के साथ पीर माजिद के लिए ऑप्शन से बाहर, बड़ा करारा स्ट्रोक और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे पॉइंट बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 25 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। पीर माजिद का इनफरादी स्कोर 2 चौकों की मदद से 13, 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 25 स्कोर हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब का बिना किसी नुकसान के। अच्छा आगाज फराम होता हुआ और 8 से जायद की औसत से रन आ रहे हैं। इस दौरान आजान हो रही है। हम कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे आजान का वक्फा लेते हुए। Jalan Ahmad Nabil.
तो अजान का वक्फा जो है मुकम्मल होता हुआ इस दौरान आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा 39 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब का 126 रन के ताकुब में आज़ाद इशफाक है बॉलिंग मार्क पर। पारी का चौथा ओवर फेंक रहे हैं और आखिरी गेंद के साथ चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ एजाज तांतरे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस दौरान बैकफुट पर गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 39 स्कोर बिना किसी नुकसान के 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 126 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब को और कहा जाएगा कि एक अच्छा आगाज फराम होता हुआ। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है। 39 है स्कोर और कुल मिलाकर 87 रन अभी भी दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 16 ओवर्स का आना बाकी, 96 गेंदें, 87 रन चाहिए और कोई मुश्किल काम नहीं होगा, सिर्फ विकेट पर ठहरने की जरूरत। पीर माजिद ने 16 रन बनाए, महराज ने 13 रन बनाए हैं। पीर माजिद ने 16 गेंदों का सामना किया जबकि महराज ने 6 गेंदों का बल्कि 8 गेंदों का सामना किया है। Undoubtedly, this has been a good start in the reply of 126. Haven't lost a wicket yet, and after 4 overs, they're going nearly 10 runs per over with 39 on board without losing a wicket. 87 runs to get of 96 bowlers, so less than run a ball chase, 10 wickets in hand. You can say everything going right for Advocates, High Court Advocates Cricket Club. It's going to be bread and butter for them at this stage. And over number 5 is about to commence, and the bowler is just setting the fielder. Gazanfar it is. He's got the ball in hand. The penultimate over off the power play. And it will be Mirage to face him. 39 it is without losing a wicket. A good partnership for the first wicket. The first ball, and he starts down the leg side. And has been the problems for the side of Bar Association's Gandharbal. Bowling it way down the leg side, and couple of extras to start with. You see the one batter batting on 13, another on 16. So 10 runs have already come off those extras, and we're just in over number 4. Just how to work on those. A bit quicker, shorter and wider outside off stump. And the batter definitely had a chance to have a go at this delivery. But beaten due to the extra bounce, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. They can afford to take that time. They can afford a couple of quiet overs here. 90, more than 90 deliveries and less than 80 runs to chase. And on to the next ball. Bit clever there by the batter as he watches the ball. He never throws there, but they will have to stay happy with a single. It's 41 without loss as the two openers have started really well. Have kept wickets in hand, taking those calculated risks as well. Whenever they got a chance when they got a bad ball, they just try to put that away. And especially it has been Pir Majid putting those bad deliveries in style. As Gazanfar goes again, and it's a gentle push, nicely covers the line of the ball, pushes it on the offside. The fielder is inside the ring, and won't be any chance of a single. Still 41. 85 runs to get of 92 bowlers. 93 bowlers they have. So Gazanfar goes again, and he pushes it with hard hands. Nicely pushes it in the gap, goes to down to mid-off, and they stole a single. Good running between the wickets. 42 without loss it is. After 4.4 overs, 92 bowlers for 84 runs to win. As he goes to Mirage. Fuller, Mirage drives handsomely. That's a fantastic strike, but he has deep cover in place at the boundary. That was a superb shot. That was so good off the bat, but he just manages a single. Over number 5, 43 on board. Has a good start. It's a quality start for District Advocates Srinagar as he goes for the final time, and he pushes it back to the bowler as the bowler fielders it on the bounce. There is no chance of a run. 5 overs gone. They're going nearly at 9 runs per over. It's 43 without loss. Has been a good start. Has been a spectacular start for the bat, chasing 126.
And no doubt it's a modest target. It's a low score. That as a bowling unit, you'll have to work hard, and wickets will mean that you'll be back into the contest. But until now, it hasn't worked for them, as haven't been able to get wickets up front, and no wicket in those first 5 overs. It's always about power play when you're defending a low score, and you just need those wickets in the power play, and it hasn't happened. So, and the batters have surely kept the bowlers at bay and turning things on in their favour. With 83 runs to get off 90 bowlers, less than run a ball chase, as Fayaz gets ready with the first ball, and inside edge tricklers to fine leg. He was trying to go big on the onside this time. He was trying to flex his muscles, and thick inside edge rollers to fine leg region. Wicketkeeper tried his level best to go there, to dive and to take the ball, but doesn't gather it. Got the fingertips, and rollers to the fine leg, gets the single. And may I remind you once again, it's Bar Association's Cup, and this one is down the leg side, surely will be called a wide. It's been the bit problems for the bowlers, and they haven't been able to find that right spot where they can bowl, or where they can trouble the batters, or where they can keep batters quiet. And has been a good session of play for the chasing side. And on to the next ball. Pushes it with soft hands, and he was interested in single but non-striking. The non-striker was never interested, and he was just watching the ball as mid-on fielder goes quickly across and stops the ball and denies any chance of a single. As Fayaz goes once again down the leg side. This is bad bowling. You just need to bowl well. You just need to be disciplined with lines and lengths, and continuously giving those wides, continuously bowling those leg side-ish deliveries, and the runs are flowing for Advocates Cricket Club Srinagar. Next ball, and he nicely goes across the stumps, and with a gentle forward push down to mid-on, and they steal a single. Ejaz Tantre is watching from Rahama and Mirar Salan. Walaikum Salam, thank you very much for joining us. As we're in the final over of the power play, 6th over in progress, 47 on board without losing a wicket. It's been a great start with the bat. You're chasing just 126, and all you need to do is just stay there, get your feet in. And the next ball, you can see the batter is right forward with bat and pad close to each other, and hits it back along the track. The bowler goes on his follow through, and there is no chance of a single. 79 runs to get off 86 bowlers. It's been quite a spectacular start with the bat, and the thing which is in favour of the plus point, which is in favour of Advocates Cricket Club Srinagar, is that they haven't lost a wicket, and that's a gorgeous shot. Full driven on the up mid off is inside the ring, and he's just watching the ball. He's just a spectator as the ball races along the track and into the longer boundary for 4. Was right in the hitting zone, was right in the slot, and that has been driven handsomely. Beautiful hands of a beautiful batter as the ball goes down to the long off fence for 4. 50 up in style as 5.5 overs have been bowled without losing a wicket. This is quite an impressive start with the bat. Chasing 126, a modest target, and they are making inroads with a beautiful approach in the batting, with that intentive approach in the batting. The final ball to go off the field restrictions. 2 men outside the 30-yard circle. He can place long on and deep scare like it is. Final ball, and the batter is half forward, pushes it with soft hands to cover, and there is no chance of a run. Power play done and dusted, and it has wholly and solely belonged to High Court's Advocate Cricket Club Srinagar. The way they batted, the way they started the chase, and looks like they're going to be the hot favourites to scale the target and to carry the day. And turning the corners, they have played so well, cautiously first couple of overs. Then whenever they got the chance in the overs, they got those bad bowlers, and they put those bad deliveries in style away. 6 overs gone, 51 without loss, 75 runs to get off 84 bowlers, less than run a ball chase, 10 wickets in hand, and you're definitely going to bat on a batting side to carry the day and to go over the line and to book your place into the next round.
तो 6 ओवर्स का खेल हो चुका है। मज़ीद कमेंट्री आप तक पहुंचाने के लिए हम जो है कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज़ान हो रही है, तो आज़ान का वक्फा लेंगे। लेकिन कहा जाएगा कि हाई कोर्ट की टीम जो है वो मुस्तहकम पोजीशन में। तो अजान का वक्फा जो है मुकम्मल होता हुआ, इस दौरान आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा कि 7वें ओवर का खेल जारी है। 51 स्कोर बिना किसी नुकसान के हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब का, और एक मुस्तहकम पोजीशन इस मुकाबले में। सिर्फ 126 रन का हदफ मिला था मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद गजनफर की, और गेंद को खेल दिया है हवा में शॉट, लेकिन उस ओर फील्डर तैनात, रोकने की कोशिश लेकिन नाकाम। और देखना होगा बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद की रफ्तार कम होती हुई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर क्या 2 रन मुकम्मल किए हैं या 1 रन मुकम्मल किया है, अभी तक अंपायर की जानिब से इशारा नहीं आया है। स्कोर जो है 53 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। 2 रन का इजाफा स्कोर में, 53 मजमूई स्कोर। पीर माजिद 20 रन पर खेल रहे हैं, महराज ने भी 20 रन बनाए हैं, और पीर माजिद एक मतलब फिर गजनफर की गेंद का सामना करेंगे। गजनफर बिल्कुल तैयार बॉलिंग मार्क पर, और सामना करेंगे उनकी गेंद का पीर माजिद, जिन्होंने 20 रन बनाए हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौवन स्कोर बिना किसी नुकसान के हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब का। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, और देखना होगा क्या 6 रन का इशारा आएगा या 4 रन का। 4 रन का इशारा आता हुआ आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस गेंद को खेला और 4 रन हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल, 2-3 कदम आ गया है, और बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ 4 रन के लिए। तो 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन के इजाफे के साथ 58 बिना किसी नुकसान के। 58 मजमूई स्कोर। अगली गेंद, इस मतबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब, 1 रन बनाने का मौका। उसके लेग बाउंड्री पर फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 हो चुका है। 59 मजमूई स्कोर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का
आनंद ले सके। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। 59 स्कोर, 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मीर अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो इस मुकाबले पर छाई हुई। मजीद जो है उन्हें रन्स दरकार 67 मुकाबला जीतने के लिए। 67 रन चाहिए, जबकि अभी भी 13 ओवर्स का आना बाकी है। कुल मिलाकर 78 गेंदों का आना बाकी है। अब बॉलिंग मार्ग पर आज़ाद इशफाक को लाया गया है, जो कि अपना दूसरा ओवर फेंकेंगे। पहले ओवर में 14 रन दिए आज़ाद इशफाक ने। सामना करेंगे उनकी गेंद का पीर माजिद, जिन्होंने 25 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए। पीर माजिद अगली गेंद के साथ इस मरतबा एक और बड़ा स्ट्रोक, और इस मरतबा गालिबन गेंद मैदान से बाहर जाएगी, बल्कि कैच वहां पर हासिल हुआ है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, और पहली विकेट गिरती हुई पीर माजिद के रूप में। पीर माजिद के रूप में यह पहली विकेट गिरती हुई और आजाद इशफाक के खाते में जाने वाली विकेट। 59 के स्कोर पर यह पहली विकेट गिरी हाईकोर्ट की। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें और बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं। आज़ाद अशरफ हमारे साथ, आज़ाद अशरफ जो है, बल्कि आज़ाद इशफाक बॉलिंग मार्ग पर है, और बट अब्दुल हमीद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बट अब्दुल हमीद साहब, आप मेरे होम टाउन से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी अरसे दराज से जो है पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाए तो कम ना होगा, क्योंकि गलत ना होगा, और रहमा की बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए हमेशा जो है आगे रहते हैं। तो बट अब्दुल हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लाइव नशरियात में हमारे साथ। और बार एसोसिएशन गांधरबल की जानिब से बॉलिंग मार्ग पर है आज़ाद इशफाक, जबकि हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब की जानिब से नए बल्लेबाज आए हैं आरिफ सिकंदर, और आरिफ सिकंदर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर जाते हुए, क्योंकि वाइड, बल्कि यहां पर जो है 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, स्कोर जो है 22 की सूरत में हासिल हुआ। एडवोकेट बार एसोसिएशन गांधरबल और हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब के दरमियान यह मुकाबला जारी है, और हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब को मजीद जो है 66 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि उनके पास विकेटें भी मौजूद है और गेंदें भी अभी उनके पास बहुत ज्यादा है। 66 रन चाहिए, 77 गेंदें बाकी है। बॉलिंग मार्ग से आजाद इशफाक अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद की बैकफुट पर, गेंद को जो है सिर्फ बल्ला दिया, क्योंकि जानते थे कि स्लिप पर फील्डर है और थर्ड मैन मौजूद नहीं, और गेंद सिर्फ एक तपा खाने के बाद बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। महराज के बल्ले से आने वाला ये चौका, उनका इनफरादी स्कोर 24 हो चुका है, जबकि मजमूई स्कोर 64। 1 विकेट के नुकसान पर मजीद 62 रन चाहिए। कुल मिलाकर 75 गेंदों का खेल बाकी। इशफाक एक मतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 65, 1 विकेट के नुकसान पर। महराज 24 रन पर खेल रहे हैं। आरिफ सिकंदर जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। आजाद इशफाक अगली गेंद के साथ, यह 7वें ओवर का खेल, बल्कि 8वें ओवर का खेल जारी है। ऑफ स्टंप से बाहर, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। बार एसोसिएशन गांधरबल को विकेटें दरकार, मजीद जो है यहां पर विकेटें चटकानी होगी ताकि दबाव बनाया जाए हाई कोर्ट टीम पर। अगली गेंद आजाद इशफाक की, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार जो है थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, और गेंद गई गली की जानिब, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया 30 गज दायरे पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बार एसोसिएशन गांधरबल और हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के दरमियान यह मुकाबला इस वक्त जारी। मास्टर तारिक अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हैं इलाहीपोरा आलूसा बांडीपोरा से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और पीरजादा शकील भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ आरिफ भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, भट्ट अब्दुल हमीद साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जुड़ने के लिए। 66 स्कोर, 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 1 विकेट गिर चुकी है। इस दौरान हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब की मजीद जो है 72 गेंदों का खेल बाकी, रन दरकार 60 मुकाबला जीतने के लिए। So it's going a bit easier for the batting side as they're chasing 126 and they've started so well. 66 off the rate was going more than 8 runs per over, and the asking rate at the start of the innings was shade over 6, and now it has dropped below 5 runs per over. So 5 runs per over is what they need, and it's been a good start for High Court Advocate Cricket Club. Mehraj is batting on 25, and Arif Sikandar, the newcomer at the crease, is yet to get off the mark. It will be Khurshid Rathar to continue. His second spell, he is in 2 overs, none for 14 in the first one as he goes to Mehraj. Drivers back past the bowler and hits the strikers, hits the sticks at the non-strikers end. And that was a good looking bowler's back drive. And he's lucky there that the bowler didn't get any hand, get any touch to the ball, and hits the timber at the non-strikers, and that was straight as an arrow but doesn't get any run at all. 66 for 1, over number 9 in progress. 60 to get off 71 bowlers. 9 wickets in hand. Khurshid goes once again. Bit fuller, and he was trying to wait for the ball, gets wrapped on the pads, and he was trying to push it with soft hands. Still no run. You lost a wicket, but you need to bat with that intent you've been batting so far, and don't go into the shell and don't let the pressure come on you whenever you get the chance, when you get the bad ball in an over. You just have to find those boundaries. You just need to rotate the strike well and keep that scoreboard ticking along. As Khurshid goes once again onto the pads, goes and bowls him this time. He plays down the wrong line. You see the ball was on middle and leg stump and then ships away, and the batter misses it, and off stump goes for the toss. Second one goes down, and clearly blaming the batter there. He's playing down the wrong line and gets castled. Cartwheeling goes the off stump, and it is the second wicket. One brings another as Mehraj departs. Second one goes down. He was trying to go onside, pitching on middle and off stump, leg stump, and then it shapes away, takes the off stump, and he departs. 66 for the loss of 2. Tariq Abdullah is watching us from Ilahipura, Alusa, Bandipur, and Mushtaq Dar as well. It is the second wicket. That's what Bar Association's Gandharbal needed in this match, to strike back and to be into the contest. Completely bowlers in this time, and it is the second wicket. Brought in as a bowling change, Khurshid Rathar, and he bowled well in the power play, and now in the second spell, and it took him just 2 bowlers to dismiss the batter. 2 wickets down on 66. Now it was looking one-sided, the game was going one-sided, but can they make a match out of this one? Can they strike back into this game? And after those 2 quick wickets, the chance is there for you. There are always those doors wide open for you to make a comeback. As there is Azan time going on, call to prayer, as we'll be back after a short little break.
Bravo. आता की यात नुसता होतो नाही. Gazana şey mi? आता की यात नुसता होतो नाही. So as on time is concluded and we're back again. 79 for the loss of 2 as Azad goes once again. Top edge in the air and over third man and into the fence for 4. Trying to go onside, he was eyeing that mid-wicket area, gets it high on the bat, gets it right off that edge of the bat, and third man had no chance at all. With that boundary, score moves to 83 for the loss of 4. Now they need 43 runs to win. Now they need 43 to scale the target. Down comes the batter, goes cross-batted, onside, times it so well. But there is deep mid-wicket fielder in place. He covers a good ground and he runs to his left end. 2 more runs have been scored. In the meantime, Advocate Irfan has joined us on YouTube and Jahangir S. But Walaikum Salam, wishing you a good day ahead as he goes once again over the stumps. Down the track goes the batter again and he pushes it hard, and the bowler on his follow through fields well and denies any chance of a single. 85 for the loss of 2 it is. We're in over number 10, so halfway stage still to get, and they are well and truly in the game. Next delivery, shot one and he pulls it away to mid wicket and we'll get a single. 9.5 overs gone, 86 for 2. So 61 bowlers left and they need 40 runs to win.
So it's less than 4 runs to chase. This has been a quality chase. This has been well calculated chase by Advocate 11 Srinagar. As the left-hander who arrived to the crease started with couple of boundaries, couple of big shots, and he's 11 of just 4 bowlers. Gets ready to face the final ball of over number 10 as Azad goes. That's a good ball, a bit of bounce onto that, and the batter doesn't connect at all. It's a dot delivery to finish over number 10. 86 for the loss of 2. अल्ताफ अहमद भट्ट हमारे रेगुलर व्यूअर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहांगीर एस भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 86 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। मजीद 10 ओवर्स का खेल आना बाकी और सिर्फ 40 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। जबकि 8 विकेटें एडवोकेट हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के पास मौजूद है और इस वक्त जो है सलमान इशफाक और आरिफ सिकंदर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। सलमान इशफाक सामना करेंगे राजा फैयाज, एडवोकेट राजा फैयाज की गेंद का। बार एसोसिएशन गांधरबल की टीम जो है उन्हें विकेटें दरकार इस मुकाबले में बने रहने के लिए। 10 ओवर्स का आना बाकी है। कुल मिलाकर 60 गेंदें और 40 रन चाहिए हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब को मुकाबला जीतने के लिए। गेंद की और गेंद को जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, विकेटें छोड़कर गेंद को खेलना चाहा था आरिफ सिकंदर ने, लेकिन गेंद जो है स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में। राजा फैयाज बॉलिंग मार्क पर है। पारी का 11वां ओवर फेंक रहे हैं, इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर और 1.1 ओवर में कुल मिलाकर 8 रन दिए राजा फैयाज ने। बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। ओवर में अगली गेंद के साथ छोटा सा रनअप ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। गेंद का इंतजार किया, बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर गेंद के नीचे, बाकी का काम तमाम किया फील्डर ने और इस तरह से ये तीसरी विकेट गिरती हुई यहां गांधरबल की, बल्कि हाई कोर्ट टीम की। और तीसरी विकेट गिरी है आउट होने वाले बल्लेबाज आरिफ सिकंदर, जो आउट होकर पवेलियन वापस गए हैं। और कुल मिलाकर यहां से जो है अब अभी भी 40 रन दरकार, जबकि अब 7 विकेटें जो है हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब के पास। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आएंगे जो साथ निभाएंगे। सलमान इशफाक का 86 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर और सूरज बादलों से बाहर आता हुआ। सूरज बादलों से बाहर आता हुआ और आप डिस्प्ले पे भी महसूस कर सकते हैं कि अब आप सब व्यूअर्स को जो है बिल्कुल डिस्प्ले पे इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो इस वीडियो में आती हुई। राजा फैयाज है बॉलिंग मार्क पर। अल्ताफ अहमद भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उमर वानी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं। इसके अलावा एडवोकेट इरफान भी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब राजा फैयाज ओवर में अगली गेंद के साथ नए बल्लेबाज तनवीर डार के लिए छोटे से रनअप के साथ गेंद की और इस मरतबा हवा में शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच लेने में कामयाब होंगे? जी हाँ, सही जज किया और कैच लेने में कामयाब। इस तरह से एक और विकेट गिरी है हाई कोर्ट क्रिकेट टीम की। आउट होने वाले बल्लेबाज तनवीर डार बिना खाता खोले पवेलियन वापस गए। 86 के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी और राजा फैयाज हैट्रिक पर है। क्या वो हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा। सज्जाद अली मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, एडवोकेट इरफान भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हैट्रिक पर है राजा फैयाज, क्या हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे? अगर लेने में कामयाब होंगे तो इस टूर्नामेंट की ये पहली हैट्रिक होगी। राजा फैयाज बॉलिंग मार्क पर है और नए बल्लेबाज के आने का इंतजार। कौन से नए बल्लेबाज होंगे हाई कोर्ट टीम की जानिब से, ये देखना होगा। 86 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर, रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 40, जबकि गेंदें बाकी है 57 गेंदें, 40 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और नए बल्लेबाज जो है पवेलियन से नमदार होते हुए हाशिम आए हैं नए बल्लेबाज।
मैं माजरत चाहूंगा, हिशाम है नए बल्लेबाज और उमर वानी जो है राजा फयाज के लिए लिख रहे हैं। राजा फयाज ऑन फायर और हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे? हिशाम नए बल्लेबाज है जो सामना करेंगे राजा फयाज की गेंद का। राजा फयाज जो है ओवर में चौथी गेंद के साथ और हैट्रिक वाली गेंद होगी। राजा फयाज बॉलिंग मार्क पर तैयार, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी तैनात और ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात। गेंद को वोट दिया, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, क्या दूसरा रन भी मुकम्मल होगा? बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब और इस दौरान तीसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ और 3 बल्कि 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 90। यह चौका आया है हिशाम के बल्ले से, उन्होंने अपना खाता खोला और 90 मजमूई स्कोर हो चुका है। मजीद जो है 36 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला जीतने के लिए 36 रन चाहिए और मुकाबला जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के अगले मरहले तक रसाई हासिल करेगी, जबकि हारने वाली टीम जो इस मुकाबले की होगी उनके लिए टूर्नामेंट में बाय बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो कुल मिलाकर 90 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर हाई कोर्ट एडवोकेट क्रिकेट क्लब का, और यहां मौका उनके पास जो है पूरी तरह से मुस्तहकम पोजीशन। अगली गेंद को खेला, अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और 1 रन के इजाफे के साथ 91 स्कोर 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 91 स्कोर 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 35 रन चाहिए, 54 गेंदों का खेल बाकी। 35 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। एडवोकेट ये सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं, उमर वानी हमारे साथ यूट्यूब पर, सज्जाद अली मीर भी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जबकि फेसबुक ग्लोबल न्यूज नेटवर्क पर सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे रेगुलर व्यूअर अल्ताफ अहमद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ साथ हमारे साथ जहांगीर एस भट्ट भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो 12वें ओवर का खेल शुरू होने को है और कुल मिलाकर 54 गेंदें, 35 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए हाई कोर्ट टीम को। बॉलिंग मार्क पर आजाद इशफाक को लाया गया है। 3 ओवर किए हैं, इससे पहले 28 रन दिए आजाद इशफाक ने। सामना करेंगे हिशाम के लिए गेंद को मोड़ना चाहते थे ऑन साइड की जाने, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 92 4 विकेटों के नुकसान पर 34 रन दरकार, 54 गेंदों का खेल बाकी। बॉलिंग मार्क पर आजाद इशफाक, सामना करेंगे उनकी गेंद का हिशाम के लिए गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन के लिए दौड़ पड़े। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो काम तमाम हो जाता बल्लेबाज का, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी और क्रीज तक पहुंचने में कामयाब बल्लेबाज। 93 स्कोर बढ़ता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर जो है 52 गेंदों का खेल, बल्कि 51 गेंदों का खेल बाकी, 53 गेंदों का खेल बाकी। माजरत चाहेंगे, रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 33 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पेज के से डीपी स्पोर्ट्स। इस दौरान हवा में खेला गया स्ट्रोक और गेंद सीधे 6 रन के लिए मैदान से बाहर, और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ हाई कोर्ट का 99 हो चुका है। 27 रन चाहिए। मुदस्सिर तांत्रे हमारे साथ जुड़े हैं, हाई कोर्ट टीम को जो है टीम के बारे में लिख रहे हैं एडवांस जी, बिल्कुल। और सज्जाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद इस मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद को रोकने में कामयाब। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन के इजाफे के साथ 100 रन मुकम्मल होते हुए 101 4 विकेटों के नुकसान पर, और 12वें ओवर का खेल जारी है। 12वें ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगे आजाद इशफाक। So 2 more deliveries to go in this over, and they have already got 10 runs, just 24 runs away to win the game and to advance into the next round. This has been a good chase. They started well and the partnerships have done the job for them. The left-hander is batting so well, 19 of just 7, shot again and hits it uppishly down to long on, and he will get a single. And they are stealing a couple as well. That is excellent running and good athleticism, sprinting
across the turf and they complete a brace. It's 103 for the loss of 4, just 23 runs away to seal the deal, to seal the match as he goes for the final time. To the left-hander, that is a beautiful drive, that's a wonderful stroke, and nobody even moved as the ball races along the turf into the boundary for 4. That is some quality shot, that is a wonderful strike. And look at that shot, beautiful extension of the arms, finds the gap, beats long off and extra cover. The ball races along the turf and into the fence. Mudassir Tantri and Umarwani are the part of live broadcast. Thank you very much for joining. With the ball to go in over number 12, just 19 runs away. This one on the onside, beautifully picks that one away down to the Scalag region. They get a single, he returns a strike. 12 is gone, it's 108 for the loss of 4. Just 18 runs to get up 48 deliveries. Hisham and Salman have played nicely so far, especially Salman is playing a blinder. 26 of just 14 bowlers. Thank you very much all the beloved viewers, Umarwani, Sajjad Ali Mir and rest of the viewers who have been the part of this vital broadcast. Thank you very much for providing your love and support, and they are slowly making their way to go over the line and to carry the day, to go with the swing. Their batting has been absolutely terrific to watch. Chasing 126, they started well and now on the course, on the track to chase down the score. This one has been lofted away on the onside, a big shot and 6 in the slot, and he picks the ball so nicely and he picks the length so early, goes aerial, goes uppish and goes down to the mid-wicket fence for half a dozen. He wants to finish it early, Salman. And it's 114 for 4 into the game, and they are just 12 runs away to seal the victory. That's a massive strike, enormous, and has cleared that mid-wicket boundary with ease. He moves to 32 of just 11 bowlers. This is fantastic batting. 14th over is in progress, 13th over is in progress as he goes again, and he goes inside out, up in the air, but this one has gone the distance again. What a strike this is, what a shot that is, inside out, well crafted and aerial and way back into the stand as the fielder was just watching the ball sail over his head. That is shot and a half, shot off the match until now. Just 6 away, 120 for 4, and he has played a miraculous innings for the team. 38 of just 12 bowlers, just dealing in sixes, just smashing the bowlers to all corners. But the previous shot, that was a standout stroke of the day. Here he goes once again, and he goes again, and he finishes off in style. 3 sixes of 3 bowlers to seal the match. Fantastic ball striking this is. Wide outside off stump, just opens his arms and goes aerial up and over as he launches the ball into the stand as for a 6. That is a fantastic victory for High Courts Advocate Cricket Club Srinagar. They have won the game by 6 wickets and they have completely outplayed Bar Association's Gandharbal, and they are through to the next round. You can see the celebration is glowed. They are over the line. They have carried the day. Congratulations side for going into the second round. So this is it for the day. We'll be bringing you the live and exclusive coverage of the double header, but the venue will be Mansir Cricket Ground. Do join us. Until then, take care. Allah Nigeban.